क्या थर्ड पर्सन है फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन चला भाई थर्ड भाई बेंजा का दोस्त आ गया भाई। बेंजा नहीं आया तो बेंजा के दोस्त आ गए भाई। ठीक है भाई क्या ही अबे साले मैं बोलूं। जीटीए में गाड़ी फर्स्ट पर्सन में चलाना प्रेफर करता हूँ। ले भाई नेम टैग देख ले मेरा गोल्ड लीडर इजी। गोल्ड लीडर जेडी दिखा रहा है। गोल्ड लीडर अपडेट नहीं होगा, वो अगले रिस्टार्ट में होगा मेरे ख्याल से। अभी नहीं होगा अपडेट वो। तेरे में क्या दिख रहा है बूमर? बूमर वीमर नहीं, HM169 गोल्ड लीडर ही आ रहा है मेरे लिए। गोल्ड अरे वो कह रहा हूँ टैग। ओ टैग बोल रहा है क्या? हाँ। टैग तो हो गया रहेगा। वो देख तूने गोल्ड लीटर लिखा, वो नंबर प्लेट पे लिख के वो एल्स्टन गोल्ड। रेडी है सागर? चलो चलो पहला बंदा गया अपना। अरे भाई ये भी आप भी निकला सागर। Keep right and then turn right. लेट्स गो। जेडी भैया ने तो आते ही ऑपोजिट लेन में गाड़ी चलानी शुरू कर दी। वो तो हमने भी कर दी भाई। लेट्स गो इन बैन इनकमिंग बॉयज। देखते हैं आज कौन बैन होता है। At the roundabout, अरे भाई ये take गाड़ी the क्यों बंद हो second गई? exit. हेलो ब्रेक डाउन हो गया है। गाड़ी बंद भी हुई तो इंजन का आवाज नहीं आया भाई अभी आ तो रहा है इंजन का आवाज, पहले तो थोड़ा भी नहीं आता। सागर को पूछते हम लोग। हेलो कुत्ता जी क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। ठीक है भाई रुक जा, अभी मैंने भी रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ तेरे को। चल इसी बात में मैं भी अल्ट F दबा दिया, बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। मेरे साइड मिरर और सब कुछ क्लियर है। अगर तूने सामने से आगे ठोक दिया रहेगा तो तेरी गलती है। जो आशीष ऐसे क्यों पूछ रहा है? जीडी Get कम ready to turn right. बड़ा खराब चल रहा है क्या? मैंने ध्यान नहीं सब दिया। बराबर ही तो चल रहे हैं। तो भाई मेरी पिंग 193 MSQ है। Turn right. अरे भाई आशीष Get ready to आई turn वॉज right. डूइंग दैट बिकॉज वो था ना, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे ना ब्रो। तो वैसे भी पीसी का मेरे को कुछ खास Turn चीजें right. था नहीं। हेलो अरे भाई एल्स्टन का आ गया भाई। एल्स्टन का टिकट टूट गया भाई। भाई एल्स्टन जल्दी जाएगा जो हिसाब किताब दिख रहा है मेरे को। अरे वो स्लिप हो गया था, पानी बहुत था, बाहर जा रहा था। At the roundabout, take अभी the तेरे को first कितना आ रहा है exit. आशीष? Exit भाई right. एल्स्टन का पत्ता कटेगा भाई जो हिसाब किताब चल रहा है। एल्स्टन हर टर्निंग में ठुक रहा है। एल्स्टन सेल चल रही है, दूसरे अकाउंट में खरीद के रख लेंगे, कोई इशू नहीं। भाई सामने ट्रक फंसे हुए हैं, जीएस लेफ्ट लेन आ जा। अरे वो कंट्रोल नहीं हो रहा गाड़ी। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, मेरे से दूर चल। इधर ट्रक फंसे हुए हैं। अरे इसे पता है क्या चाहिए? ए रुकते क्या पूछे क्या? मैं रुक रहा हूँ, मैं रुक गया। मैं भी रुक गया। ए रिवर्स मार। भाई ब्लॉक किया गया क्या यहाँ पे? Bowden the gamer. Hey guys, what happened? वो कौन वो पूछ रहा है हमसे? तू सोफिया बोल रहा है। Why are you blocking the lane? Move. It is in line with standard rate right now, right आशीष? पीछे से आ गया एक बंदा। चल भाई वो जा ही रहे, वो सोफिया जा रहे हैं भाई, हम अपना चलते हैं फिर। चलो इनको बुली करेंगे क्या हम लोग? पागल है क्या भाई? अरे पागल के अबे अनिकेत तू खरीद लेना भाई ये क्या कहते हैं ETS। तेरे पास तो कंट्रोलर भी है। क्या भाई? अच्छा नहीं अनिकेत है। बोलो यार। What is ETS? Watch my stream. ये सर्विस लेन कौन चल रहा है ये? मैं क्या तो मेरा नाम नहीं, पहले ही बोल रहा तू, तेरी गलती का है, खुद जिम्मेदार है। आ जाओ भाई आगे आ जाओ, जगह दे दी इन्होंने लेफ्ट लेन। हमें वैसे हम सभी को लेकिन राइट लेना है। Fuck this shit.
भाई मैं पीछे चल रहा हूँ, मैं देख इन ट्रक को। एल्स्टन टूकेगा, एल्स्टन टूकेगा, एल्स्टन भाई टूकेगा। ट्रक वाले की फट गई भाई, जो एल्सन ने आगे ट्रक वाले ने, एल्स्टन ने काम में ऐसा किया, ट्रक वाले की फटी जाएगी ना भाई। Keep मैं right. लेन चेंज कर रहा था। यार राइट ही जा रहे हैं सब लोग राइट ही जा रहे हैं। नहीं करना चाहिए मेरे को ऐसे। Exit right. एल्स्टन ने तो मेरे को चेप दिया भाई रीलिंग में। एल्स्टन को देखे ट्रक वाले की फट के 4 हो गई भाई, वो और मालूम कर सिंगल लेन हो रही है भाई। एल्सन कहाँ जा रहा है? एल्सन कहाँ जा रहा है? मैं रुक गया भाई, उसको जाने दे, उसको जाने दे, रुक गया। यस नो इट्स नॉट कॉनवे, आई डोंट वी सेपरेट इन मेड, ओके? जा भाई आगे जा, उस ट्रक को आगे जाने दे रहा हूँ मैं, आगे क्यों नहीं जा रहा है? जेडी तू लेन में मत। वही जेडी तू अपोजिट लेन में मत चल। हाँ तुम्हारे उसको ट्रक वाले को आगे जाने दे रहा हूँ, जा ही नहीं रहा। इसने क्या कर दिया? फक सॉरी चालू हो गया, इनका रिकॉर्डेड लिपट गया हूँ। At the roundabout, जेडी take the southern exit. ओ ये भाई भाई सही कौन है। था ये अंधा? सही है, एल्सन ठीक है भाई, अंधा है ना तो इतना बड़ा अंधा है ना तो यार। तू देख कितना जोर से ब्रेक मारा ना। वो कह रहा है गाइस पुश हिम। वी हैव प्रॉब्लम, आई रिपीट। वो हमको पुश करने के लिए बोल रहा है। वाह, हम लोग पुश करेंगे उसको। कुछ नहीं अपने पास बंदा। करना है नहीं भाई, रिकॉर्ड करके मजे ले जाते हैं लोग, ये नहीं करना जेडी। ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, फिर आगे आ जाओ ना फिर तुम लोग। बाय 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 बाय। आजा भाई चल आगे आ जाओ। ये जा रहे हैं। क्या भाई हो गया, आ जाओ तुम तो आ गया। रख देंगे। ये स्लो चलते क्या, इनको स्लो करे। Need to escort to Sofia. ए चलो भाई, सोफिया का एस्कॉर्ट करते लड़की हो, आ जाओ। एल्सन ने कुछ गलत काम किया भाई, माइक म्यूट करके बैठ गयो चुपचाप। नहीं अबे मेरा पिंग ज्यादा आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ एक बार आउटर रिटर्न हो जाए। बंदा आ रहा है, शॉर्टकट मत मार जो भी है। Exit now. अनिकेत, दिस गेम इज टू चिल। यहाँ पे उड़ नहीं सकते। यहाँ पे उड़ नहीं सकता तू। यहाँ पे उड़ेगा तो बैन हो जाएगा। बैन 10। मैं क्या बोलता हूँ, कैलाश इस वक्त चले क्या गाड़ी लेके? भाई रहने दे भाई। हाँ अरे यार चलो ना, क्या डरते नहीं हो? चल तो ले गए, लेकिन गलती से हमारी गलती की नहीं, हम कोई अरे सामने वाले की हो ही गलती नहीं की। सकती ना भाई। भाई मैं बता रहा हूँ, एल्सन बैन हो जाएगा। क्यों चाह रहा है जीएस तू? हाँ एल्स्टन तो बैन हो जाएगा, हम लोग तो समझ एल्सन का तो 100% कंफर्म बैन आ रहा है। एल्सन इज रिच गाय, यू नो ही कैन परचेज अनदर कॉपी। चलो एल्सन ले लेगा ना भाई, तू बैन हो गया तो। वैसे पहला बैन है ना तेरा, 3 दिन का रहेगा, टेंशन मत। क्यों मेरे को बैन करने को बोला था? तेरी स्किल्स पे सागर को भरोसा नहीं है और जेडी को पता। मेरे को पूरा भरोसा है भाई, तू चल मेरे साथ। नहीं भरोसा तो है, लेकिन जो अभी दिखाया उसने उस पर भरोसा हाँ। नहीं है। ऐसे क्या देख लिया तुमने और क्या दिखाया एल्स्टन ने? ये सामने क्या रुके हुए? राइट साइड में बंदा खड़ा है। हाँ रुके। मजा आता है ना ऐसे बंदे ऑन मोड में। साले इतने दिन साले बिना हॉर्न के जिंदगी कटी है जीएस की। ओम शांति ओम बन गया। ए ब्रेक मार लियो एल्सन, दूर से ही पहले बता रहा हूँ तेरे को। At the roundabout, मैं है ही नहीं उधर। take the second नहीं, इसलिए तेरे को exit. पहले ही बता दिया। Exit now. मैं है ही नहीं उधर। 30 पे कटेगा गाड़ी का टर्न, पहले बता रहा हूँ तेरे को। क्या बोलता है हम तो शॉर्टकट मारेंगे, एल्सन ने लॉन्ग कट मार दिया भाई। भाई मैंने तो लिटरली 30 पे टर्न काटा है और मैं तब भी एल्सन से आगे चल रहा है, पता नहीं कैसे। सेम। उसने लॉन्ग कट मारा भाई एल्स्टन ने। हमने भी लॉन्ग कट ही मारा भाई, ठीक है भाई। भाई ऐसे थोड़ा थोड़ी slow 30 कर- पे काट रहे हैं इस मोड पे थोड़ा straight. स्लो कर लियो। अरे स्लो करना है रहता तो गाड़ी थोड़ी ना लाते, फुल स्पीड में काटो भाई। नहीं वो है ना, फुल स्पीड में काटेगा तो फिर घास में जाएगा, फिर तो घास काट रहा होएगा। कोई नहीं,
बंदे हैं आगे वैसे भी आगे- गाड़ी थोड़ी ज्यादा ही आगे- बड़ी हुई है। आगे बंदे आगे बंदे आगे पंप में बंदे हैं ये पेट्रोल पंप चले गया, हम भी थोड़ा टाइम पास करते उधर। भाई। पूरा कॉन्वॉय है, रुकना है। हम भी कौन है, चलो पेट्रोल पंप चलो ना, टर्न मार के लगाओ उनको, बोलो गाड़ी हटा तुम्हारी, हमको भी पेट्रोल भरना। मैं तो डीजल ही डलवाने आया ब्रो। एलिस्टन का वेट कर, चलो उनके पास चलते स्लीपिंग एरिया में। अरे सच में खत्म ही हो गया था भाई आधा, 25% गया मेरा। हाँ हाँ यहाँ पे फ्यूल बहुत कम हो जाता है, मतलब गाड़ियों में जल्दी कम होता है। भाई नो कोलिजन नहीं है, आराम से। हाँ हाँ मैंने तो कहा पास करी, तूने कहाँ पार्क करी? कहाँ पे उन्हें ढूंढ उनके बीच में मेरे को अभी जीरो दबा के। अच्छा, घुस गया तुम भी आ क्या? जाओ इधर ही। हमको देखना हम लोगों ने कहाँ करी है। तूने तो उसके पीछे खड़ी कर ली। अबे एक के अंदर एक घुसे हुए हैं बंदे भाई, उड़े गए क्या? नहीं नहीं, एक के अंदर एक थोड़ी है जेडी, साइड में है ना, देखना 0 पे देख। अच्छा 2 घुसे हुए हैं, तू सही कह रहा है वो। वो मूव कराओ। वो नो कोलिजन बन के आ रहेगा वो, अब उनके साथ ही है क्या बंदा दूसरा वाला? मेरे ख्याल से उन्हीं के साथ ही रहेगा। अरे ये, अबे ये कंपनी वाले बंदे भाई, दूर चलो इनसे। निकल गए भाई वो लोग। नहीं वो लोग हमारे एरिया में ही जा रहे हैं मेरे ख्याल से, लेफ्ट ही ले रहे हैं अब जहाँ हमें जाना है। इनके साथ चलेंगे हम, 2 आगे चलो 2 पीछे चलो। अरे वो पीछे वाले लौंडे आ गए क्या? नहीं वो आ गए। हाँ वो पीछे वाला आ गया मेरे ख्याल से। हाँ वो आगे निकला अभी। चलो इनके साथ। हाँ उनके सारे बंदे जानते हो, उस पे चलियो। उनके बंदों के बीच में मत घुस कौन हुआ जिए। क्या मेरे पीछे? नहीं ये था तेरे पीछे। ते मेरा रिकॉर्डिंग चालू कर लो भाई, ये गाड़ी वाले मजे लेने वाले हमारे। कितनी स्पीड पे चल रहे हैं बता दियो, मैं उस हिसाब से एडजस्ट करेगा। मैं 80 कर लूंगा अभी, रुक इसके पीछे जाके। ये लोग 90 पे जाएंगे ना, तो 90 कर लेंगे अभी। 90 कर ली मैंने। गुड नाइट 90 से तो तेज चल रहे हैं मेरे ख्याल से, लग तो ऐसा रहा है। हाँ 103 चल रहे हैं, मतलब मैं 103 चल रहा हूँ। नहीं ये लोग सामने वाले Go straight. थोड़ा सा स्लो। एल्स्टन का रह गया पीछे पीछे गाड़ी मार तुमने इतने मजे लिए क्यों शांत हो गया भाई? ऐसे तो मत। क्यों करता है भाई जीएस तो? मैं तो एल्स्टन अच्छा डिसीजन ले रहा है कि मैं बैन ना हो, इसलिए पीछे चल रहा है। ऐसे नहीं, वो तूने कुछ बोला इसलिए वो बुरा मान गया, इसलिए वो आगे नहीं आ रहा। धीमा कर ले मेरे पीछे वाला। बुरा मान गया तो एल्स्टन? देख भाई बोल नहीं रहा है, बोल में म्यूट कर लिया भाई उसने, बोलता अब तो मैं जवाब भी नहीं दूंगा। सामने से ट्रक आ रहा है। तो एल्सन रोना भी शुरू कर दे, और आंसू ना एक जार में कलेक्ट कर लियो, और जब प्यास लगे तो वही पी लियो। वाह मैन, स्लो 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 कर ले सागर, पूरा ही स्लो हो गया ये लोग। जा आगे जा, तू आगे जा। चल एल्सन मैं तेरे साथ है, तू आगे चल, देखता तेरे को कौन क्या बोलता है। By the way, a guy suggested Matrix 55-4F as case MWE। नहीं MWE मत ले, MWE मत ले, या तो एंटेक की एक्सट्रीम गेमर ले, गोल्ड वाली, ठीक है, एक्सट्रीम गेमर गोल्ड, या फिर बोले डीप कूल वाली। MSI का B550 मत ले, आई सजेस्ट कि तू Asus का ले ले फॉर ईज ऑफ यूज, बिकॉज आई डोंट थिंक यू विल बी टिंकरिंग विद इट। स्लो कर ले सागर। यहाँ पे लोग शॉर्टकट लॉन्ग कट सब ले रहे हैं। At the शॉर्टकट roundabout, लॉन्ग कट नहीं, ये take बंदा the रहा second सामने। exit.
नहीं वो तो मैंने है। तेरे को मारा क्या? एल्स्टन ये जीटी मैंने तेरे को मारा क्या? नहीं 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 तू मेरी स्क्रीन में उड़ के हवा में आगे होके गया है, तू पता है? सेम सेम तेरा सेम कुछ उड़ के प्रॉब्लम है सागर। नहीं नहीं उड़ के गया मेरे उड़ साथ के गया भाई ये। मेरे में 0 डैमेज है, मेरी गाड़ी कहीं उड़ी नहीं है, परफेक्ट। नहीं मैंने भी हिट नहीं करा तेरे को। अच्छा I was like if that is server lag. वो आज हमारा पिंग अलग चल रहा है, मेरा पिंग रिप आ रहा है। मेरा तो परफेक्ट आ रहा है भाई। मेरा GS रिप आ का रहा है, भी- मैं बोल रहा हूँ। जीएस का भी सही आ रहा है। हाँ मेरा भी सही है भाई, मैं खाली फालतू में बोल रहा था नेट वाले को। कार की हवा से उड़ा नहीं होगा। मेरा भी रिप हो गया। सागर के बराबर ही आ गया। ए भागा ना सागर, वाई तो ए स्लो 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 स्लो। उड़ा मेरा ले। भी 180 हो गया भाई। ये बंदा घुसेगा क्या? मत घुसने दे सागर, मत घुसने दे उसको। तू चल 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 चल, उसको अभी बाहर ही रख उसको। एल्स्टन आ जा, इसको अंदर मत आने दे। एल्स्टन आने दे रहा है उसको। नहीं एल्स्टन ने नहीं आने दिया, तो पीछे रह गया। मेरे मैसेज नहीं दिख रहे? ओ दिख रहे हैं, सॉरी। आई एम सामने से बंदा आ रहा है। उड़ा दे। उड़ा दे। मैं बाहर तो निकला था भाई, ये क्या कर रहा है? डरा रहा है सागर को। सागर डर गया भाई, सागर डर गया। मैंने पूरा देखा। मैंने पूरा देखा भाई। भाई मैं डर गया, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। वो देखा स्लो मैंने। स्लो 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 स्लो। हाँ जेडी हम तेरे से बहुत दूर चल रहे हैं, चिल मार। ए सागर भगाना यार, इतना स्लो क्यों चल रहा है? मैं ना एक्चुअली खाना खा रहा था और सीसी में गाड़ी चल रही है। तेरा सीसी वाला स्पीड कम करने वाला सीसी होते रहते हो। नहीं नहीं मैंने कम पे ही सेट करा था ताकि डिस्टेंस रहे जेडी और मेरे में, ताकि रिएक्शन टाइम हो मेरे पास। ट्रेन वाला सीसी था ब्रो ये। Keep right. भाई One आपकी good, स्पीड में one चल रहे हैं bad. हम लोग लिटरली, गाड़ी लेके। मैच अच्छा चलेगा फॉर अ भाई डिफरेंस। आ गया, ट्रक तो भगा रहे हैं भाई फुल स्पीड में। उनके है पीछे तो मैं भी आया हूँ। 110 पे भगा रहा हूँ। आ जा, सामने से एक बंदा आ रहा है, जल्दी ओवरटेक करना है तो। पीछे वाला हॉर्न मार रहा है जीएस। हाँ वो क्या आगे जाएगा, मत जान दे साले को। मत जाने दे साले। उसकी डर ले। गलती है, उसकी उसको गलती है उसको कि उसको उसने ओवरटेक लेन दे, सामने से बंदे आ रहे हैं। ठुकवा दे उसको उसको। ओवरटेक लेने और फिर वापस मत आने दे। हाँ स्पीड बढ़ा ले। ओ भाई ओ भाई ब्रेक 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 ब्रेक। ओए देखो भाई, हार क्यों आया तू? भाई ये तो देख भाई। ये तो भाई उड़ गया भाई बंदा ये। गाइस व्हाट हैपेंड टू यू? उफ बोल हैप्पी बर्थडे टू यू। We are fine bro, we are fine. How are you? अच्छा बोल रहे क्या बंदे इनके? अरे भाई ये देख ए वॉच आउट माय फ्रेंड। At the roundabout, take the first God exit. knows bro, God knows, we don't know. ए सागर क्या? ओ भाई नो 22 डैमेज दे दिया तूने अरे मेरे रे को। रे रे रे। ठीक है भाई जेडी। अरे तो तू टच हो गया। एक काम कर F7 कर लो, यहीं पे बाजू में ही है, जल्दी कर लो F7, इनके साथ चलेंगे। F7 Finding new route. चला अपना पहला विकेट था सागर, एल्स्टन का कलंक हट गया मत। क्या बोलता है? भाई मैंने तो खुद कुछ नहीं किया, मेरे को तो जेडी ने मारा नहीं, पीछे नहीं, से। नहीं। पीछे जो से? भी है भाई। पीछे से? हाँ भाई तो मेरी स्क्रीन में मेरे पीछे था। मैं तेरे आगे था भाई पूरे टाइम। क्या बोल रहा है? अरे यही हुआ है, ये स्कैम चल रहा है भाई इसका। Turn right. पर एल्स्टन का कलंक मिट गया भाई माथे। यहाँ से राइट की Turn तरफ लो right. जल्दी। चलो ये सब हो गया क्या? रिपेयर कर लिया क्या सागर तूने? मैं तो ब्रो सबसे आते ही पहला रिपेयर। मेरे ख्याल से वो दूसरी ड्रैग तरफ बाय है। कर दिया। ट्रू ब्रो। सब बाहर आ गए, एल्स्टन बाहर आ गया। मैं आ रहा हूँ, मैं भगा के आ जाऊंगा। चलो वही रूट फॉलो कर रहे हैं ना हम। हाँ हम तो रूट ही फॉलो कर रहे हैं। हाँ तो मैं आ जाऊंगा।
सागर एक काम कर 100 कर ले। अबे एल्सन तेरे माइक से आवाज नहीं आ रही भाई। कुछ बोला ही नहीं मैं। क्यों? सागर 100 पे है ना तू? नहीं नहीं, मैंने ब्रेक मारता जरूर से ताकि तू आगे जाए। नहीं नहीं 100 पे कर ले। आगे है चले कि- जा तू। हेलो हाँ हाँ लो हैक कर मैं आगे। आ रहे हैं हम लोग। अगर तू आगे तो रुक जा फिर। तेरा किलोमीटर कितना दिखा रहा है? 775 ये तो पीछे है। पीछे है फिर तो हम लोग के तो। वही। 775 दिखा रहा है। हाँ तू हमारे पीछे है। अरे भगा। रूट भी थोड़ा डबल रूट कैलकुलेट तो नहीं हो रहा है इनका? आई थिंक सो। नहीं नहीं हम लोगों ने आधे से ज्यादा रास्ता हमने स्किप कर लिया ना हाँ। उसमें F7 करते ही। एल्सन तू भी F7 करके आ जा आधा। हम्म 100 किलोमीटर आगे आ जा F7 करके। F7 1 नहीं क्या? ए तुम लोग कहाँ पे हो भाई? मेरे को दिखाई नहीं दे रहे तुम लोग। आगे ब्रिज पे है तो आज दिख जाएगा। JD sees me and JD be like let's do this. मैं पीछे देख के गाड़ी चला रहा हूँ, अगर सामने से ट्रक आए तो बताइए मेरे को। नियर बाय का है वो देखता रहा बंदा है। रुक के मुझने है, मैं ब्रिज पे रुक के मुझ देता हूँ। रुकना है क्या? तुम लोग हाँ मैं एक काम कर, आगे एक राइट पे जगह आ रही है, वहाँ पे घुसते हैं। वहाँ अंदर एक्सप्लोर मार के आते हैं। लेट्स हाँ फुल पावर JD। तब तक एल्सन आ जाएगा। किधर है तुम लोग? JD फुल पावर एक्सेलरेट। हाँ फुल 110 पे वो भगा रहा रूट हूँ फॉलो कर, आगे जाके तेरे को ब्रिज मिलेगा, उधर हम लोग रुके ब्रिज के आगे। जब तू ब्रिज क्रॉस करे ना तो बता दियो, हम तेरे को रास्ते में मिल जाएंगे आके। हम तब तक थोड़ा सा ये घूमने आए हैं, घूमने। मैं। हम टाउन एक्सप्लोर कर रहे हैं इधर। Recomputing. एल्सन ने F7 नहीं किया था क्या? हमने किया था अभी? नहीं नहीं नहीं, नहीं एल्सन का रिस्पॉन्स टाइम अच्छा नहीं था अपने लोगों का जितना। यहाँ बोला गया F7 तो F7 कर दिया गया ब्रो। सागर ठोका। नहीं Go बढ़िया। straight. At the roundabout, take the fourth exit. अरे मजा आ रहा उठ उगा। था। Never तो mind. नहीं मैंने तो साइन तोड़ा बस। Go straight. अरे भाई मेरे को सागर लेफ्ट शीशे में दिख रहा है। रेस हो रही है भाई, सागर मेरी फास्ट एंड फ्यूरियस। लेट्स गो। नहीं हम लोग आगे ब्रिज से ना एक राइट में एरिया था, वो एक्सप्लोर करने गए थे, तो तुम्हें आना तो आ सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है। गया क्या? Roundabout. अरे मैं ऑफ रोड में मुड़ने रहा था, मेरे सामने खंबा आ गया। खंबा को डॉज राइट साइड तो नहीं हो रहा था, लेफ्ट साइड ही हो रहा था, तो झाड़ी में गिर गया। आजा, यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता और रह गया है। Exit हाँ, बस वो now. कर रहे हैं। Rerouting. बंदे भी है उधर। Finding new वही route. देखा क्रेओवा मैंने। में। हेलो Make a हाँ। U-turn now, क्रेओवा है okay? ना क्रेओवा। Let's find हाँ recomputing. वहाँ से लेफ्ट आ जा, मतलब जो रूट दिखा रहा है वही वाला फॉलो कर। Please make a U-turn when possible. भाई ये तो Never रोने mind. लग गया, ये तो प्लीज मेक अ यू टर्न पे आ गया है। Okay, let's find a new route. Make a U-turn now. Finding new route. Rerouting. When possible, make a U-turn. Finding new route. प्लीज मेक अ यू Never टर्न। mind. रोने लग गया I'll ना find बोलता a रहो new तेरे route. को। Recomputing. ओके लेट्स फाइंड इट। सार्कास्टिक हो रहा है भाई ये धीरे धीरे। सोच इस बंदे को हम 3 जने बुली करके भाग जाए। Turn left. Boop boop, there's a sound of a police. Get ready Go. to turn right. Turn right. Turn right. Get ready to turn right. आ जा भाई निकल जीएस। तुम लोग। हाँ निकल गए भाई, यहाँ पे Turn थोड़ा right. खड़े होने हैं। रुकना थोड़ी था वहाँ पे। भाई बीच रास्ते में एल्स्टन मिलेगा अभी हमें। अरे वो मैं बंदे की मदद लेने गया था। अच्छा देख गाड़ी में ना मैं कभी मजे नहीं लेता ब्रो, अपने ही होने हैं। नहीं क्यों निपटा भाई? देगा गेम हमें। कुछ नहीं करेगा भाई। At the तूने क्या किया है roundabout, तेरे को? take the first exit. Exit now. लोग किधर हो एग्जैक्टली? हम लोग आ रहे हैं बाहर। नहीं नहीं उल्टा क्या लगता है?
Go straight. At the roundabout, take the first exit. Exit now. Go straight. अरे भाई बैठ गया क्या तो फिर से इंजन डैमेज हो रहा है भाई, येलो लाइट आ रही है। फुल ऑन F1 फील्स लेके आ गया मैं तो ब्रो, मजा आ गया ब्रो। सही रास्ता था ये। Turn right. एक काम कर सागर, तू हाईवे पे जाके खड़ा हो जा। वही कर रहा हूँ मैं। हम लोग आते तब तक। जेडी ऐसे रखते हैं ना बिल्कुल रोड के एज पे गाड़ी अपनी। मतलब भगाने के लिए रेडी। यस, और थोड़ी सी एंगल में हल्की सी पीछे कर ले तू रोड पे। ये आ गया। इंजन रन कर लिया मैंने तो। और मॉडल्स ऐड करने चाहिए। ट्रू भाई ट्रू। तो जीएस को जगह देता हूँ। हाँ हम तीनों ऐसे लगाते हैं। सागर थोड़ा मेरे पास आ जा तो। वही कर रहा हूँ। आजा जीएस कर ले खड़ी। इंजन ऑफ कर देना रिवर्स करके। जीएस तो बहुत ज्यादा रोड पे है। मैं ले रहा पीछे, अंदर डाल रहा हूँ। हाँ बस बस। भाई फोटो हल्की से आगे ले जीएस। थोड़ा सा ये जेडी और मेरे तरफ लगा ना पैरेलल। मैं पहले वो गैप में घुसाने की ट्राई करता, बाद में तुम लोग ने साइड में कर दी ना गाड़ी। बस क्या इतनी, क्या थोड़ी आगे करो मेरी। सही है ब्रो, सही है। इसमें हैंड ब्रेक खींचने का आवाज सही आता है, क्या बोलते हैं? हाँ इसकी हैंड ब्रेक के बाद मेरे को बड़ी प्यारी लगती है। एल्स्टन कितना किलोमीटर बचा है? अरे वो रास्ते ही मेरे को कंफ्यूज हो गया, मेरे को पूरा घूम गया मैं। स्क्रीन शेयर कर। हेलो ये क्या चल रहा है भाई? ये बंदा आ रहा है, मेरे को डर लग रहा है। आ जाएगा, रुको एक मिनट। किधर है तुम्हारे का डिस्टेंस कितना है? हम लोगों का है भाई लोग 583। फोटो क्यों खराब करना चाहते हैं अपनी? 583। भाई मेरा 900 है अभी। तू उल्टा भाग गया भाई। दिखा स्क्रीन शेयर कर। जेडी राइट साइड में व्हील मोड़ दे अपना। मैं फोटो ले रहा है बड़े दिन के बाद। वो कह रहा हूँ। वो देख, वो भी आना चाहता है फोटो में, देख रहा है। वो तो पता ही है मेरे को, लोगों को शौक होता ही है। स्क्रीन शेयर कर एल्स्टन। ये जेडी का पीछे का रुक, पहिया मैं देख चला ले रहा कैसे अभी। घूम रहा है। तेरे लिए भी घूम रहा है क्या सागर? नहीं नहीं 925 है अभी। अरे स्क्रीन शेयर कर एल्स्टन। आई एम सेइंग रुको मैं चला रहा हूँ। ऐसे 1 सेकंड ऑल टैप कर, स्क्रीन शेयर कर और फिर आ जा वापस। इजी। रुक जा एल्स्टन, साइड पे रोक, रही पे राइट पे रोक दे। रही पे घास फूस पे। मैप खोल। तेरा वापस आने का रास्ता लगा हुआ है। हाँ तूने देख वो 1 हटा अपना पहला वाला। जेडी अपने गेम में एफ दबाइए एक बार आके। आ गया ना ये देख 583 हो गया अब तेरा वो। जेडी अपने गेम में एफ दबाना एक बार। गुड नाइट अमोक। इसका वापस जाने का भी रास्ता लगा हुआ था, इसलिए इसको 900 किलोमीटर दिख रहा था। मैं बोल रहा ना तेरे को, इसने रिवर्स मार्क लगाया कहीं पे, इसलिए इसका रिकैलकुलेट हो रहा है। आने वाला है ये हमसे बस 40 किलोमीटर पीछे। चलिए आने के बाद और एक फोटो खींचेंगे, चारों जन खड़े रहेंगे यहाँ पे क्लोज एकदम पक्के। हाँ ठीक है। जेडी के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगा के। तो एक काम करो ना, पहले से जगह बना लेते हैं इसके लिए। हाँ थोड़ी सी ना सीधे खड़ी कर लेते हैं। नहीं ऐसे तू जेडी को चिपक जा, ये लग जाएगी इधर एक और गाड़ी। मैं तेरे पास खड़ा हो रहा हूँ, वो वहाँ खड़ा हो जाएगा।
यू नो मैं तुम सागर के बाद चिपका लेता हूँ, सागर तू उसके बाद चिपका। एक काम करता हूँ, मैं कोने में लेता हूँ फिर। नहीं नहीं, तू और थोड़ा और जीस राइट में ले ले। हाँ रुक वही ना, हो बोल रहा जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इतने ज़्यादा चिपका लेते थोड़ी सी। बेंजा नहीं है ना, बेंजा के लिए कर देता ये। हूँ। रिवर्स आएगा। जेडी तू मेरे पास आ जा। देख अबे मेरी रुको हो बे गई रुको, है। वही ऑपोजिट साइड चलो, वो ज़्यादा बेटर है। अरे नहीं रहने दे, अभी अलाइन हो गई। अच्छा अपोजिट साइड में अपोजिट आ गया साइड ना, में जगह पे ज़्यादा है। मेरा इंजन माल फंक्शन हो गया था। वो नीचे ना टेक्सचर की ना एक हल्की सी लाइन है, उस पर जस्ट टच कर लो अपने गाड़ी। जेडी थोड़ा सा पास आ पाएगा? तेरे पास आऊँ? हाँ थोड़ा सा ना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया आई फील। जीएस आ गया। रुक मैं आगे आता हूँ और अरे भाई भाई टायर तेरी तरफ ऐसे मोड़ दो। क्या और आ गया और आ गया। और आ गया हो? आगे हाँ। जाना है ना खाली। हल्का सा बस और आ इतना। गया बस। बस बस हाँ। ना। टायर उस साइड लूँ क्या? हसन बस। नहीं जीएस और आ गया। अरे बहुत पीछे है तू अभी तो। और आ गया। स्ट्रेट कर व्हील और आ गया। हल्का सा राइट साइड करके आ गया बल्कि। और आ हल्का सा और आ बस। ए पीछे जा। बस कितनी देर पहले बोला था आता ही है। हल्का सा पीछे जा। बस हल्का सा और। हाँ ठीक है अब ठीक है अब ठीक है अब ठीक है अब ठीक है रुक जा। अपना टायर पूरा राइट साइड घुमा दे, लेफ्ट साइड घुमा दे। मैं जेडी हल्का सा आ गया ना तू, थोड़ा सा आ गया तू। तो आता हूँ। एल्स्टन हल्का सा जेडी से दूर पैरेलल पार्क कर पाएगा तू? हल्का सा, थोड़ा सा लाइक अनकंफर्टेबल हो गया जेडी आई फील। सही है इतना? हाँ जेडी तेरा तो सही है। हाँ सागर ने क्या लिया? सागर कार्टून बराबर अभी क्या? ठीक है। थोड़ा पीछे जा एल्स्टन। जेडी का जहाँ से विंडशील्ड चालू होता है ना, वहाँ पे तेरा बम्पर का स्टार्टिंग आना चाहिए। हल्का सा पीछे जा और अभी ना तू बस, ज्यादा। बस, हाँ बस, अभी थोड़ा हार्ड। सा आ गया। थोड़ा सा और पीछे नहीं रुक, थोड़ा सा और पीछे जा। और पीछे जा। ये एल्स्टन पीछे जा ना, अच्छे से पीछे जा। हल्का सा 5 मीटर पीछे चले जा। जा पीछे। अब हल्का लेफ्ट कार्ड। लेफ्ट हल्का सा, अबे हल्का सा। हल्का ओनली फ्यू। हाँ अब आ गया। चल अब हार्ड लेफ्ट काट दे और गाड़ी का इंजन बंद कर दे और एफ दबा दे। एफ एफ एच नहीं। कोई नहीं, हॉर्न में फोटो आएगा। फोटो हॉर्न में आएगा नहीं। अरे हॉर्न फोटो में हॉर्न आएगा नहीं भाई। भाई अरे भाई ये क्या गया? मेरा एंगल ऐसे जरा अचानक से साला हाँ वही, मैंने भी ऐसे कैमरा एडजस्ट कर रहा है फ्री मोड में। तो मैं पीछे से ले गया एक फोटो। अब नोइस। चल ले। एक फोटो और जा, एक लेगा और। लेट अस गो। चलो भाई, कौन आगे जा रहा है? जेडी गोल्ड लीडर हो। क्या तो नहीं रहा? और शायद हाउ यू डूइंग? अरे ये जो सिटी में सर्विस सेंटर आएगा ना, उसमें रुकूंगा। वो 533 रिमेनिंग है ना, मतलब 530 तेरा। हाँ 530 520 ऐसे कुछ ही है। वैसे उसके आसपास है। मेरा 527 527।
साला ये गाड़ी तीसरे गियर पे फुल हो जाती है भाई। भाई तूने इसमें भी छोटे गियर रेशियो लगा रखे है क्या? क्या गाड़ी में क्या 12 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन लगाया क्या तू? नहीं नहीं, रेशियो पूछ रहा हूँ, At the मतलब हाँ। टॉल गियरिंग है क्या take the टेक्निकली? first exit. देख मैंने Exit जो now. सबसे हाईएस्ट था ना मेरे ख्याल से गाड़ी में थोड़ी चेंज होता है। होता नहीं नहीं गाड़ी में गियर बॉक्स है ना ऑफलाइन, मतलब तू यार मैंने चलाई थी तो ज़्यादा स्पीड था यार, ऑफलाइन तो गाड़ी चलाई थी या नहीं चलाई थी यार नहीं। At the roundabout, take the second exit. Dance for Exit nearly 10 now. seconds tonight. Why have you done that? स्पीड लिमिट लग जाए सिटी की। भाई यार बहुत बुरा लगता है ये। अच्छा सर्विस में जाके कोई सर्विस करा रहा हूँ। चल हम देख के आते हैं सर्विस में कौन सी कंपनी है चल रही है। क्या स्पीड Okay, लिमिट 60 की let's तरह find गाड़ी a new वही route. होगी। Please सानिया make a सानिया आ U-turn गई है when ब्रो, possible. सानिया। फैट बेली हॉलिंग्स, नाइस नेम दो। यू डोंट नो दिल्ली में ही हो ना? अरे क्या हो गया? अच्छा ओके, समझ गया मैं शायद, समझ गया ब्रो, समझ गया तू क्या बोलना चाह रहा है मैं। बट शायद यू डिडंट डू इट ऑन पर्पस ना, दैट्स अ डिफरेंस ब्रो। कुछ इन गेम बोलियो। हेलो, आई नहीं मेरे को आवाज। किसी और को है मेरी बात? क्वेश्चन ये है पहले। आ गई मेरे पास। अच्छा, ये मेरे पास 2-3 माइक है ना, तो वो कोई भी पिक कर रहा हो। अभी बोलियो। हेलो। हेलो, हाँ ठीक है ठीक है। सब रेडी है? ये रायन। सब रेडी है? हाँ ठीक है। Turn right and then continue straight. Go straight. Keep left. लेट्स गो फुल पावर जेडी। भगा रहा हूँ भाई मैं फुल पावर। स्लो 70 75। 88। चल तू भगा नहीं तो मारता ना। 92। ओ गया मैं गया। भाई गया है। ए पलट सीधा गया? हो गया। पलट गया? अरे नहीं, ए इसको धक्का मार जल्दी। अरे यार चल मैं सर्विस से हो गया है। रुक रहे हैं हम लोग यहीं पे। 92 एक्शन बहुत ब्रेक ज्यादा मार लियो। मैं अगर ना 80-85 काटता ना आराम से कट जाती वो। पहला वाला टर्न तो कट गया मेरा, दूसरा वाला टर्न कट द गया। नेविगेशन वॉइस असिस्ट। अरे वो रात को सुनेगा ना तू, तेरे को बड़ा ना वो लगेगा वियर्ड, अगर तू उसे रात को सुनेगा। भाई इन्होंने गेम फिक्स कर दिया, भाई इन्होंने गेम फिक्स कर दिया फाइनली। वो कीज दिखा रहा है मेरी कि कौन सी कीज यूज करता हूँ मैं। नहीं। कौन सी कीज? अरे मतलब वो मैंने F6 F7 F8 वाली ना रीमैप कर रखी है, हाँ क्योंकि मैं पहले ना स्ट्रीम के लिए वो यूज करता था, तो वो मैंने रीमैप कर दी थी गेम से निकाल के। अरे जेडी, इसका इंजन चल रहा है एल्स्टन, इंजन बंद कर, डीजल नहीं हमारे पास। मैंने इंजन का बस इलेक्ट्रिक पार्ट ऑन कर रखा है भाई, गैस वाला बंदा मेरा। नहीं नहीं, ये एल्स्टन का था। हाँ। ये वो तुमने किधर नोट पे किया रे इसका क्या बोलते हैं वॉइस असिस्ट? क्या किया मैंने? वॉइस हाँ समझा नहीं भाई। अरे वो नेविगेशन वाला वॉइस कर रहा है। हाँ बता दे भाई सागर इसको। क्या बताना है उसमें? नेविगेशन वाला वॉइस कैसे सेट करते हैं? नेविगेशन वाला वॉइस कैसे सेट करते हैं? हाँ सेट का बटन दबा देते हैं और हो जाता है। सेटिंग्स में है, ऑडियो की सेटिंग्स में। चलो भगाओ। रुक ना, ये ऑडियो सेट कर रहा है अपना। है धक्का दो किसको पीछे से? नहीं नहीं, ए जीएस सेम डिस्टेंस पे आके जेडी आगे लगा, नहीं तो इसके पीछे लगा। वॉइस नेविगेशन फिर सही से खड़ी करियो गाड़ी, अगर जेडी के आगे लगा रहे तो हल्की सी लेफ्ट करके लगाइयो।
जेडी ने लाइन पे चढ़ाई नहीं है, तू लाइन पे चढ़ा दे वाइट वाली। व्हाइट वाली लाइन पे चढ़ानी है। हाँ तू व्हील टच करा दे अपने वाइट वाली लाइन को। तो देखना हमारे पीछे वाली गाड़ी सबसे अंदर है, उसके बाद मेरी हल्की सी बाहर है, जेडी की थोड़ी और बाहर है, तेरी सबसे बाहर होगी। हाँ तो बस दोनों टायर लाइन पे लगा पैरेलल करवा दे। काटा ब्रो। और डिस्टेंस मेंटेन करियो भाई। ये जेडी सच्ची यार, तेरे ने ये जो तूने भाई लगाए है ना, क्या लगाया मैंने? भाई लगाए ना जो तूने अपने मिरर्स के, हाँ अच्छे नहीं लग रहे भाई। हाँ हटा ही नहीं सकता मैं, नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। क्या नई गाड़ी मजाक कर खरीदी। रहा है? हाँ हाँ हाँ, मैंने भी तो खुद ऐसे ही करा था कुछ। नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी हटाने के लिए। हो गया एल्स्टन? हाँ चलो। ये एल्सन व्हील सीधा रख और लाइट ऑफ कर। अरे निकल रहे हैं भाई। चलो लेट्स गो, भगा रहे हैं फिर। ले भाई तुम अभी निकल रहे हो, इतनी मेहनत करा नहीं। यार ये ऐसे करते हैं यार, इसमें क्या है बोला। कोई नहीं भाई भगा रहे हैं। आओ। अरे यार ये डिफरेंशियल कैसे ऑन हो गया मेरा? गलती से हो गया होगा, क्या हो गया? ओ भाई किसकी गाड़ी है पिकअप पकड़ रही है? एल्स्टन। ये का सब मोड़ है ब्रो। नहीं नहीं क्या नशे हैं। वो भैंस का मैं ना मैप देखने लग गया और मैंने दीवार में बैठ दी गाड़ी। ये डीजल डलेंगे नीचे जाके। And then exit right. अरे पर ये क्या मोड है ये? हाँ हाँ मैंने जूम कर रखा है। Exit right. 50-60 पे मोड़ देना भाई, ये वाला मोड़। सेकंड वाला तो आराम से 100 पे हो जाएगा। 70 मोड़ गया ऐसे ही है। और सेकंड वाला तो हाँ आराम से एक्सेलरेट कर रहा Get था। ready to turn right. डोंट इवन एक बार रुक। कहाँ जाना है मेरे को? अच्छा यहाँ जाना है। इसके लिए तो भाई मैं थर्ड पर्सन में आ गया, कंफ्यूजन हो रही है मेरे को। Turn right. ये पेट्रोल पंप पे रहा। शॉर्टकट नहीं मार सकता क्या? मार सकता है तो टेक्निकली देखा जाए तो। पेट्रोल पंप में आ जा सीधे। Turn left. मैं एल्स्टन को फॉलो कर रहा था। आ गया। मेरे को लूज नहीं है ना ये। एल्स्टन इस साइड है क्या? इस साइड है। Keep right. And then exit कहाँ right. जा रहे हैं? यहाँ सागर यहाँ जाना है। वहाँ जाना है? हाँ वो घूम फिर के वहीं पे आ रही थी रोड। अच्छा ध्यान दिया मैंने अभी। Exit right. ठीक है भाई मेरे को घेर लिया। चलो जीएस चल चल जीएस। एल्स्टन को तो अंधे। आ आ गया। गया वो मेरे पीछे है, चल ठोक दे सागर से। ये कहाँ जाता है रोड? वो घूम के वापस उधर ही जाएगा, ये राउंड अबाउट है भाई ये पूरा। ब्लॉक है सालों का। ये आ जाओ। आ रहा हूँ मैं, रुक घूम के आ रहा हूँ अब। चाइनीज को स्काउट। ये तुम लोग का लिमिट नहीं लग गया क्या? सिटी लिमिट है बे? At the roundabout. बेचारा जीएस फिर पीछे रह लगा गया। है, लगा है मेरा, लगा है Exit शायद। now. अब भाई ये लिमिट लगाना, फिर भी ये सागर कैसे आगे जा रहा था पता नहीं। हो गया। वही ना जानबूझ के ठोक गया, रिकॉर्ड किया है मैंने। आई विल रिकॉर्ड। मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा इडियट। अबे तू देख मेरी स्क्रीन पे ना, मैंने तेरे को कुछ भी नहीं किया ठीक है। ऐसे पिंग का इशू चल रहा है, मेरा पिंग जंप कर रहा है भाई। तेरा पिंग 180 है भाई। अरे जंप कर रहा है, थोड़ी देर ध्यान से देख। तुम्हारा बड़ा स्टेबल चल रहा है। 190 हो गया देख। 177 मैंने ये पहले ही नोटिस कर लिया था। 191 भाई सबसे पिंग कम एल्स्टन का जा रहा है 131। मेरा तो 131 गया ही नहीं। तेरा भी जाता है 127 जाता है, देखा मैंने तेरा 127 पता नहीं 118। देख देख तो 120 एल्स्टन का 270 चले गए जैसे चीज ने बोला। क्यों बोलता भाई चीज? पैसा ब्रो, पैसा बोल। पैसा फेंक के मारा नेट वाले के मुंह ये मेरा नहीं कम कर रहा है इसका बड़ा। में। वही तो। अबे एल्स्टन तेरा कौन सा नेट है? मैं लोकल है। नाम क्या है लोकल का? IC.net।
अभी नया है भाई ना, बंदा आ रहे हैं ऐसे सामने से बंदे आ रहे वही। डरा डरा उसको डरा। तू मत डर जाना, पता चला उसने तेरे ऊपर डाल दी गाड़ी, तो डर गया तू। 2 बंदे आ रहे, एक छोड़ के, बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है तो। अरे भाई ये तो टर्निंग पे मिलेगा मेरे को। सही रास्ता है वे। हाँ पता है मेरे ना घर में बड़ी गलत आदत है, हम ना पहाड़ों पे बड़ी तेज चलाते हैं गाड़ी। गलत आदत है। आगे कुछ भी कहना चाहूंगा। आगे आगे कुछ नहीं ऐड हो रहेगा, बस हाँ। गलत आदत है। आगे कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं। भाई पापा ने जब नई नई गाड़ी ली थी ना, तब तो भाई पापा ने हाथ मचा दी थी। सीढ़ी पता पहाड़ से नीचे आ रहे हैं और बर्फ, मतलब ऊपर ना थोड़ी सी ऊपर बर्फ गिरी थी, तो रोडों पे ना वो हो रही थी, क्या कहते हैं, रोडें वेट रहती हैं, ठीक है। हाँ। तो और उस टाइम पे ना पापा 120-25 पे नीचे उतार रहे गाड़ी, और मेरे में जो फट रही है। और गाड़ी का एबीएस हर दूसरे तीसरे टर्न पे एबीएस की लाइट जल रही है। मैं बोल रहा हूँ ठीक है भाई, ये कर लो पापा। You only one life. Live it to the maximum. बात यही है ना, यू हैव ओनली वन लाइफ। तू वो लगा ले स्टिकर, वी लिव यंग वी लिव ग्रेट। भाई ये गाड़ी का ना बड़ा अनरियलिस्टिक रिस्पॉन्स है। हल्का सा ब्रेक मारोगे ना, इसका एकदम से एंगल चेंज होता है। रियल लाइफ में घंटा नहीं चेंज होता। इसमें एबीएस नहीं लगे ना ब्रो। अभी तो तूने बोला एबीएस की लाइट जल रही, इसमें नहीं जल रही, देख मैंने। उफ। ये सोते क्या थोड़ा? चला आया। भाई मेरा भी मन कर रहा था बड़ा। क्या बे? देखा स्टाइल में सोने का। ए उड़ा भाई कोई तो जल्दी डाले। कहाँ है ये, कहाँ है जीएस, कहाँ है? घंटा नहीं हिला भाई ये। अरे जोर से तो, जोर से ओ भाई वो चला गया भाई। अबे मेरे को उड़ा जोर नहीं भाई नहीं, अब नहीं देने का, अब तो डैमेज हो गया। मैं दे। अरे दे दे ना कोई। जेडी दे रहा है, जेडी अटैक क्या डरते यार तुम लोग। मेरा डैमेज हो गया रे, काफी हाई डैमेज है। हाँ देखा, ये होता है ना भाई। रुक मैं एल्सन को देता हूँ मैं, रुक एल्सन पेड़ में जाएगा। मैंने 55 का खाया भाई। अरे मैंने क्या कर दिया तूने? मैंने बोला था एल्सन पेड़ में जाएगा। वैसे मैंने क्या बैरल रोल मारा भाई, मजा आ गया। एल्सन फंस जाएगा एकदम से, वो दीवार पे चिपका हुआ है पूरा। अभी अपना एक ही चैलेंज है, ये एल्सन को बाहर निकालना। तो आज तक में दिखाते ना कोई क्रीम फंसा था, वैसे एल्सन फंसा ना, फंस गया भाई एल्सन पूरा। इसको दूसरी तरफ से ठोकना पड़ेगा। वही कर रहा हूं मैं। हट जा। नहीं कोई देख लेगा ना बाजू में ट्रक लगा के। ये हट। चालू नहीं हो रही भाई गाड़ी, रुक 2 मिनट। गाड़ी चालू हो जाएगी तो ले लूंगा पीछे। उड़ा इसको, उड़ा पहले के सामने पक्षी नहीं हो रही, उड़ा। फुल स्पीड में आके भाई हिल ही नहीं रहा ये तो। हिला थोड़ा ही। भाई से पेड़ ने धर लिया, भाई पेड़ के अंदर चुड़ैल है। मैं बोल रहा अपने को तीनों को 100 की स्पीड में आ रहा है, एक साथ उड़ाना चाहिए। चलो पीछे चलो, इधर आओ, इधर टर्न मार के आ जाओ। चलो हाँ एल्सन से बड़ा रहा हम आता है जरा। इधर आओ, इधर फुल स्पीड में आके उड़ाएंगे। नहीं पता है, ज्यादा दूर से जाएंगे ना तो लेफ्ट ही कटेगी। अरे भाई हो गया, टर्न तो कट गया। यहाँ पे इंजन ना चालू हो रहा। चलो लेट्स गो। वो भी नहीं हो रहा भाई ये। प्रोग्रेस है, थोड़ी प्रोग्रेस है। वही साइड से मारो आके। मैंने पकड़ा हुआ, मैंने हटा रहा गाड़ी। मैंने हटा रहा गाड़ी। मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही। मेरी गाड़ी अगर मैंने और ठोका ना, मैं कहता हूँ उसका चालू नहीं हुई। भाई बंदा आ गया, जा रहा हूँ मैं, हो गया सॉरी एल्सन। अरे नहीं आईटी रुक ना। अरे नहीं होता भाई, मैं आ गया था उसको भाई। ब्रो नियर बाय पे बंदा आ गया। अरे भाई जेडी को जमीन में घुसा दिया इसने।
ठीक है भाई, जेडी खुद मार के जमीन में चला गया। जेडी को F7 मारो, सब यहीं से F7 मारो। मारो भाई, जेडी को हाँ, सब लोग F7 कर लो भाई, कर लो। हाँ जेडी देख ले, तेरे को कोई और तो स्पॉन नहीं किया ना उसने। नहीं नहीं मैंने था। Never मैंने mind. F7 करा है भाई। I'll find a new route. अरे भाई यहाँ पे भी मेरे को गाड़ी हिल रही है। ठीक है भाई। Okay. Let's भाई मैं find a F7 new पे route. खड़े हो गया, F7 क्यों कर रहा हूँ मैं? नशे कर रहा हूँ, ये क्या चल रहा है भाई ये? भाई पर तुमने रिकॉर्ड करा क्या सागर में आके? मेरे को देख, मेरी गाड़ी को देख, मेरी गाड़ी को देख। हाँ देख रहा हूँ, यहीं पे हिल रही है भाई। मैं दोबारा F7 करता हूँ। फुल नशे चल रहे भाई, मजा आ गया। 4 बिलियन हो गया, 5 ट्रिलियन हो गया भाई। 4 बिलियन, ओ मिलियन है, बिलियन है, 4 बिलियन हो गए बॉयज। क्या ETS में कैश? हाँ सही है भाई। आ जाओ भाई, एवरीवन रेडी? लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। Turn left. Keep left, and then turn left. अरे एक बात बता, वैसे एल्स्टन कैसे पलटी हो गया वो? मैं तो उधर फुल तेरे को पहले ही बोला था। मैंने मुझसे तूने मेरे को बोला था ना ठोकने के लिए, तो मैं जैसी कच्ची रोड पे है, गाड़ी मुड़ी नहीं रही, तो मैंने एल्स्टन को उड़ा दिया। At the roundabout. अरे take भाई the मैंने first क्या फुल exit. स्पीड में आके स्टीयरिंग घुमाया, पता है क्या मजा आ गया। Exit now. अरे वो सब लोग है ना साथ में हम लोग। यस, पीछे ही है उसमें, आई थिंक ज्यादा पीछे नहीं है, तेरे पीछे है। सब लोग 80 पे फंसे हैं ना। हाँ देख जेडी से आगे नहीं जाता मैं, जीएस से आगे चला जाता हूँ, लेकिन वही तो, सागर और मेरा बराबर स्पीड चल रहा है। नहीं नहीं, जो ये कहता है ना कि तेरा वो गाड़ी एक्सेलरेट करती है उसके बाद भी, हाँ मैं वो कह रहा हूँ। यार वो, हाँ चल वो रोड तो हो ही गई थी ना, मेरे ख्याल से वो रोड ऑलमोस्ट हो ही गई थी। ये यहाँ पे घर खरीदना, लेफ्ट साइड कूद के जाएंगे, चल। ठीक है नीचे से रास्ता है शायद, कूदना नहीं पड़ेगा। भाई। अरे ऑनलाइन खरीदते यार घर। नहीं नहीं जाएंगे रे भाई, प्रॉपर्टी देख के लेनी चाहिए। कितनी बारी बोला तेरे को? Recomputing. अरे रंधा पैसा है भाई, अभी उसमें भी क्या देखना। Turn left, and then turn left. देखना पड़ता है ब्रो, देखना पड़ता है। Turn left. अमीर अमीर तभी रहता है जब वो देख के परचेज करता है। Finding new route. ऐसे तो तुम गरीबों का खून चूस जाओगे। What do you think is the plan bro? गरीबों में थोड़े पैसे बांटो। ब्रेक मार लो, ब्रेक मार लो। अभी ये गाड़ी का ये भी बंदा है। ए, इसके साथ चलो, इसके साथ चलो। अरे प्रॉपर्टी बाद में, इसको पकड़ो। चलो जल्दी जल्दी Make a खरीद ली U-turn चलो। now. अभी वो उस बंदे का नाम ही रिकॉर्ड है भाई, क्या कर तो क्या मेरे ठोकेगा? नाम में भी रिकॉर्ड है, क्या डरता है तू? आ जा। स्टीयरिंग व्हील भी लिखा है मैंने तो। कहाँ गया वो? पकड़ो उसको खाली। कहाँ गया वो? राइट में ये देख चल रही है। चलो भाई। चल। Turn right. वो राइट में क्या इधर से? अरे आपने को लेफ्ट में जाना है ना पर। हाँ देखो Exit ready. ठीक है भाई, ठीक धक्का है। मारे भाई, खड़े खड़े धक्का मारा जेडी ने मेरे को। ओ भाई पीछे ट्रक आ रहा है, संभालो। जेडी क्या हो गया तेरे को? F7 करो बे, कुत्ता F7 करो। ये जेडी क्या हो गया तेरे को? अबे मैंने क्लिप करा है, देख लियो, मैं दिखाऊंगा तेरे अरे ये मैं बता रहा हूँ तेरे को, ये जीएस के साथ ना हमेशा यही सब होता है। मैंने भी क्लिक करा, देख मेरे स्क्रीन में भी सब। आजा को। अरे F7 घूम मैं के पता आते क्या है, हैं, जीएस में तेरे आगे जा रहा था, तो तेरा हल्का सा लेफ्ट साइड मेरे बम्प उसको लगा डिग्गी को, और बस आजा मैं फिसल गया। F7 देख, फ्यूल पंप दिखाता हूँ तेरे को, फ्यूल पंप। Okay. Let's find a new route. F7 देख, फ्यूल पंप यहाँ तुम पे लोग हाईवे पे आ जाओ, हाईवे पे आ जाओ। महंगा फ्यूल मिलता है। अरे सागर हाईवे पे आ जाओ। आ रहा हूँ। Never mind. I'll चलो find a new ईमेल route. पे लिखने गया।
बेंजा Get वो हो ready to गया, turn अभी क्या left. बोले, सागर की स्ट्रीम चल रही है, छोड़ जाने के, बेंजा सुन लेगा। ठीक है भाई, Turn left. मैंने सुन लेगा इसलिए नहीं बोलते, बट ये जब नहीं होगा तब बोलेगा। ठीक है भाई जी। जब बेंजा रहेगा तब बोलूँगा, अगर वो स्ट्रीम पे सुन लेगा तो गाली देगा। कोदी कोदी, मैं बाद में ही आऊँगा, तुम लोग देख मार। खेलो। बेंजा ने मैसेज देख रहा हूँ, सुन रहा है सागर की स्ट्रीम पे, मैं बोला ना। अगर आगे जा, जगह नहीं है इधर। अरे वो बंदा यहीं पे है, वो वाइट वाली गाड़ी वाला खड़ा हुआ वेट कर रहा है, वो सामने वाली लेन में। चलो सामने वाली लेन में वेट कर। मतलब अपोजिट लेन में वेट कर रहा है वो। देख एल्स्ट्रन, मी वॉचेस अ लॉट ऑफ पुलिस शोज। पुलिस वाले यहीं खड़े रहते हैं यूएस में ज़्यादातर। हेलो जेडी भैया, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। उधर वो लेन में है, एल्सन का है। आगे खड़े। अबे अपनी लेन में रहना जेडी। कैसे बोलेगा सागर अभी? ये एलिस्टन रोक, यहाँ पे रोक ले। नहीं जीएस आ ही गया, थोड़ा स्लो। हाँ चलो 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 चलो। नहीं नहीं भगा, स्लो मत चलो। एलिस्टन रन। जेडी एंड मी लाइक फुल एंड फास्ट एंड फ्यूरियस। Get ready Oh, to turn easy. left. मेरे लिए तो जेडी का फ्रंट व्हील हवा में था भाई। Turn left. आई नो साइंस की वजह रियर होना चाहिए था, बट फ्रंट वाला था हवा में। ये जेडी राइट ले आगे। लेता हूँ। अब हम गाड़ियों में आए तो ये सब एक्सप्लोरेशन तो करेंगे ही ना। Finding new route. When possible, make a U-turn. Recomputing. Please make a U-turn when possible. Rerouting. Get ready to turn right. Turn right. जीएस सागर की लेन में आ रहा था, मैं जीएस की लेन में आ रहा था। हेलो ऑरेंज लीडर, गो हेड। गोल्ड लीडर ओके। हाँ इसको जीएस को आंदे, थोड़ा धीमा चल सागर। ठीक है, मैं तो वो कर रहा हूँ, पिट कर ब्रो। भाई मैंने अभी वो देख रहा था एक वीडियो F1 रेसिंग वाली ना, और उसमें पता है ये पिट कार होती है ना, जनरली जो वो होती है ओल्ड वाली SLS AMG। भाई वो बंदे ने क्या ड्रिफ्ट मारते हुए वापस पिट में गया वो बंदा। ओ भाई ये रोड बढ़िया लग रही है, जीएस का आगे आ रहा हूँ। 100 पे चल रहा हूँ मैं, 100 सीसी पे है। देखिए यहाँ पे 100 तो चलने नहीं वाली, लेट्स बी रियल। नहीं वो ये एल्सन दूर रहा, एल्सन दूर रहा, ब्रेक मार हल्का सा। आइसक्रीम उड़ा दे, मैं बता रहा हूँ। तुम झुंड में चल रहे हो तीनों। इसीलिए तो भाई सामने से बंदा आ रहा है, सोच के ध्यान से चलना मतलब। अरे यही तो रोड थी जो जिसके लिए हम लोग ने वो मैप। हाँ वही तो।
आप जाके पहुंचे भाई, हम लोग इतना क्या घूम फिर के आ रहे हैं हम लोग। अच्छा वो बंदे पीछे से आ रहे हैं, आगे से नहीं। भाई कितनी लंबी रोड है ये। लेट्स गो। पहाड़ों में कर फिर वो कार पी गई होगी ना। नहीं नहीं, लेकिन तब भी देखना, स्कैंडिनेविया पे इतनी बड़ी रोड नहीं देखी थी मैंने जितनी यहाँ पे देखी मैंने अभी। नहीं ये डीएलसी में बस यही पैच है, मोड़ मोड़ है। मैनुअल गियर ऑप्शन हाँ है, देख। बट ये तेरे को चेंज करता नहीं दिखेगा अगर तू वो पूछ रहा है तो। आई कैन सिलेक्ट मैनुअल गियरिंग फॉर हायर टॉर्क पर्पसेस। अरे लल, साला गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत ही हक हुआ है, मुड़ता नहीं पूरा। भाई रियल में ये गाड़ी बहुत मैन्यूवरेबल है और इस गेम में घंटा मैन्यूवरेबल नहीं है। भाई वो जेडी कहाँ चला गया, तुम लोग कहाँ रह गए पीछे? क्या नहीं, मैं यहीं पे हूँ भाई, क्या बोल मैं रहा हूँ आगे, मैं हूँ आगे। हूँ सबसे आगे। सागर कहाँ चला गया भाई? नहीं, काश भी है कह रहे थे उन्हें मैनुअल गियरिंग आगे तो देखनी मेरे को है होना चाहिए था, मैं ठुक ठुका के पीछे आ गया भाई। क्यों है? 3 मोड़ में ठुका हुआ है कि ये गाड़ी मुड़ रही नहीं है, वो एक पहले देखे ऐसे लगेगा कि हाँ भाई परफेक्टली मुड़ रही है, फिर एकदम से पूरी स्ट्रेट। अरे जो टर्न आएगा ना तो जैसे टर्न आएगा दूसरे गियर पे डाल दे उसको, और जैसे टर्न ऑलमोस्ट फिनिश होना वाला रहेगा ना तो फिर से उठा दे। ले शायद तेरी बात पूरी करेगा मैं, देख। तब तक ये लोग कैच अप कर लेंगे। एल्स्टन बिट होगा वो भी एंड वाले रोड भाई। मैंने पूरे कंप्लीट करे भाई। ऑटो चला गया मैं दोबारा से। जा जेडी जा आगे। नहीं वो सागर ने स्लो कर रखी है तो मैं उसके आगे लूंगा। जेडी इस टर्न पे ओवरटेक मत कर। ना नहीं करा मैंने। नहीं मेरे को, मैंने वार्निंग दे दिया इस वाले टर्न के लिए तेरे को। वो तो मैंने पहले डिस्टेंस बना लिया तुझसे। जा आप चले जा। ये गाड़ी व्हीली बहुत मारती है। मेरी नहीं मारती, बट मैंने देखा तेरी वाली में मार नहीं दी। मैंने अभी तेरा जस्ट देखा व्हीली मारते हुए हल्का सा। अरे गेम ग्लिच्ड है फिर, क्योंकि मेरे को भी तेरे वाली में दिख रही थी। अब मेरे वाले में तो उधर खड़े थे ना, जेडी का व्हील पीछे का घूम रहा था मेरे को पूरा। वो तो नॉर्मल। क्या करे भाई, अब हम लोग यूरो ट्रक सिमुलेटर में कार्स चला रहे हैं, क्या होएगा इसका मतलब। वो भी मॉडरेट गाड़ी है ना ये। भाई अगर कुछ इन्होंने डाला होता ना कि बेस गेम हम डायरेक्ट वो कार्स का कंट्रोल ले सकते हैं तो बहुत बेटर चलती है गाड़ियाँ। बट फिर इन्हें गाड़ियों की फिजिक्स वर्कआउट करनी पड़ती। मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी तक स्कूडा ने इन्हें धरा कैसे नहीं है। कैसे धरेगा भाई, स्काउट कार लिखा है उस भाई यार जेडी देख, पूरा एक्सटर्नल रियर तो बिल्कुल सेम है भाई, फ्रंट भी सेम है। नहीं तो देखना साइन तो अलग है ना उसमें, उन्होंने थोड़े से एक तो डिजाइन हल्के से डिस्टेंस से अलग कर दिया होगा तभी तो बच रहे हैं घंटा ये सिमुलेटर है, रियल लाइफ में तो ऐसी कार भी डीजल ऑटो की तरह हिलेगी। वैसे तो जीटी का भी उसमें भी गाड़ी का 2 गाड़ी नहीं को शायद mix करके- एक्चुअली इन रियल लाइफ दिस कार इज वेरी वेल प्लांटेड ब्रो। चलाई है मैंने। At the roundabout, take the second exit. यार इसका ना टॉप मॉडल चलाया था मैंने, उसमें ना वो आता है T2P बटन। भाई अंधी पावर भाई, बस वो बटन दबाना है, लिटरली नॉस फीलिंग होती है ना वो आएगी तेरे को। At the roundabout,
Take the second exit. पक्का हूँ यार, मैं पहली बार आया बे। Exit now. सेम। ये एल्सन मेरे पास कैसे आ रहा है? हाय एल्सन। 30 किलोमीटर पर। अच्छा 5th गियर इन डीजल। अरे वो नहीं, ओ अच्छा वो नहीं नहीं, बंद हो जाएगी फिर तो, शायद बंद हो जाएगी, नहीं तो वो करेगी, हूँ करेगी। Go straight. मैं तेरे को वैसे बता रहा हूँ कि मतलब अगर इस गाड़ी के 5th या 6th में तो वो करेगा, वो दबाएगा, क्या कहते हैं, P2P वाला बटन, हिंदी पावर। मेरे को ये नहीं पता जो करंट जनरेशन आ रही है उसमें है कि नहीं, बट मैंने 2nd जन वाली चलाई थी, उसमें था P2P। हेलो जेडी, मैंने नई टेक्निक निकाली है इस गेम में, ज़्यादा स्पीड पर टर्न लेने की। हाँ उसमें ले जा राइट वाली, Go straight. है ना? मैंने भी यही करा था। ये सामने से बंदा आ रहा है भाई, ये तो पहले ही डर गया, पूरा राइट हो गया भाई वो। हाँ मैंने एग्जैक्ट ये वाला मॉडल चलाया है, ये एग्जैक्ट जो ये मॉडल है ना, यही चलाया था मैंने। ऑल्दो आई लाइक फर्स्ट जेन बेटर बिकॉज इसकी ना बहुत ज़्यादा लाइट वाइट लाइनें वाइनें वाली हैं, बट यू नो किसी और की है, हम चला रहे हैं तो हमें क्या है। फ्रेंड पूरा एक FPS गिर गया था अभी मेरा, आई फेल्ट सो बैड। क्या Keep कर रहे हैं? right. एस्तोर्बो Then turn एस्तोर्बो। right. डैफ का ट्रक डीलर डिस्कवर हो गया जो कोई खरीदता भी नहीं है। Turn right. उसको जेडी रियल लाइफ में ऐसी स्पीड लिमिट्स आ जाए। रियल लाइफ में वैसे क्यों? रियल लाइफ में 60 इतनी स्लो नहीं होता ना जितना स्लो इसमें दिख रहा है। हाँ। रियल लाइफ में मैग्नेट लगेंगे। मैग्नेट मैं नहीं, लग के नहीं। Go गाड़ी straight. खींचने लग जाएगी। Then turn right. तू अरे स्लो कर। वैसे नहीं, Turn right. मतलब इन मतलब- फ्यूचर इन फ्यूचर इट प्रोबब्ली कुड बी जीपीएस बेस्ड। मतलब ऐसे आ गया जैसे इस रोड पे लिखा है 80। ऑटोमेटिक में ही हो सकता है ना सागर। हाँ हाँ, अरे मतलब वो जीपीएस बेस्ड में ही हो सकता है कि जैसी लोकेशन आई कि ये वाली लोकेशन में स्पीड लिमिटेड। नहीं नहीं, बट तू स्पीड लिमिटेड बोल रहा है, बट वो जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहेगा उसी गाड़ियों में होगा ना। हाँ तो मतलब मान हाँ, ली हाँ। टेस्ला वगैरह हो गई ना। हाँ वही। टेस्ला या फिर जिसमें तेरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चलता है वो गाड़ी में होना चाहिए, अगर वो जीपीएस उसमें है, जीपीएस तो रहेगा ही उसमें। Get नहीं ready नहीं, to turn वैसे right. जीएस ज़रूरत नहीं होती, अगर तेरा जीपीएस बेस्ड गवर्नर है ना, वो तेरे को एक्सेलरेट ही नहीं करने दे, मतलब जो तेरा वो तो- एक्सेलरेशन होता है ना वो कैंसिल आउट कर देता है, वो तो पता है, भेजता ही नहीं ECU को। स्पीड गवर्नर की बात Keep कर रहा है ना left. तू। हाँ स्पीड Turn गवर्नर left. प्लस जीपीएस वाला। वो बहुत खर्चा करना पड़ेगा भाई उसके लिए। हाँ तो गवर्नमेंट को left. चाहिए तो करेगी, बात ही खत्म। गवर्नमेंट क्यों करेगी भाई, जो मैन्युफैक्चरर है उनके ऊपर अगर वो कंपल्सन हाँ कंपलसरी हो गया तो वही होएगा, नई गाड़ी में तो लग जाएगा पहले तो कम डिफॉल्ट लग के आएगा फिर। यस। और बाद में तुम्हारी Keep पुरानी right, गाड़ी तो उसमें and then कोई turn बोलती है भाई right. तुम कंपल्सन, तो वो भी लगा के मिल जाएगा एक्सटर्नली। भाई लेकिन फिर स्पोर्ट्स Turn कार की तो right. जिंदगी खत्म हो जाएगी।
वही तो स्पोर्ट्स कार भी लाइक देखो आई डू 0 to 60 आई कैन डू 0 to 100 भाई। फिर वो खाली ना लोग क्या करेंगे पता है कि जब आरटीओ में पासिंग वगैरह जो भी रहेगी ना तभी जाएंगे ना, Get उस ready to पर्टिकुलर turn टाइम फ्रेम के right. लिए वो रखेंगे, फिर बाद में वो वही उसका भी कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे बंद करने का। वो तो है ही है। Turn right, and then turn right. अबे तुम लोग वहाँ कहाँ जा रहे हो? मेरा तो रूट इधर तक ही सेट था। अबे इधर ये इतने Turn पीछे right. पे तक ही कैसे था। ठुक गया भाई? मैं देखिए मैं किस पे ठुका हूँ सागर? दीवार में ठुका है तू? नहीं, मैं गेट पे हूँ। गेट पे ठुक गया है तू? तूने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी थी? मैंने खरीदी है, तो ये मेरे को मैं तो अंदर आ क्यों गया। नहीं घुसने दे रहा? ब्रो हाँ, देख अंदर। तुमने इधर आ टैक्स नहीं गया। भरा था सही से, तब पता चल रहा है उसको। चलो भाई, आई डन, मेरा हो गया। अच्छा इसलिए मेरे को FPS लो आ रहे थे, मैं साला एल्स्टन की स्ट्रीम देख रहा था। तो एल्स्टन के एफपीएस गिरेंगे भाई। नहीं नहीं, तेरा भी जीपीयू होता तो तेरा भी काम होता है। इतना सही जीपे क्या काम होगा? अरे प्रोसेस तो करनी पड़ती ना मेरे भाई। चलो आज बाय। क्लिप्स दिखाता हूँ। कर लो भाई, कर लो, तुम ये सब कर लो, मैं जा रहा है। ठीक है। अरे चल एक बार मैं उड़ते हुए देख ही लेगा, अब जब चालू कर ही दिया। पहला तो ये चीज था भाई। रुक रुक भाई, पहले बंद आज करने दे गेम। कहाँ गया ये लॉन्च? यस बता। शोशा तो आगे हाँ आ गया। ऑडियो है, ऑडियो आ रही है? वापस मत आने दे। उफ मेरी गंदी ऑडियो आ रही है। अबे ये देख। ओ भाई ये तो क्या ही था भाई। ए, जेड तूने क्या स्क्रीन शेयर कर रहा है? मेरे तो कुछ दिख नहीं रहा तो एल्स्टन को देख रहा है क्या? हाँ ये एल्सन को देख रहा है। है। हाँ कर कर ये कर। तो ज्वाइन तो कर, तो एल्स्टन को देख रहा है तो अभी। तू एल्सन को देख रहा है, अब ठीक है, इसको देखना चाह। ओ, तो अरे भाई यार रुक रुक, पहले आवाज कम कर भाई। मैं म्यूट कर दिया, मैंने म्यूट कर दिया। हाँ तो कर कर। यहाँ से देख, वो फिर उसका भी मेरा क्या कहते हैं, शैडो प्ले का भी आवाज डिफॉल्ट हो गया। अरे रे। भाई ये कहाँ गए? तो कैसे हो गया? वो ट्रक ये देख इधर। अरे तूने हाँ क्लिप ना, वो देख सागर देख पीछे से कुछ ठोकता है मेरे को। अभी ठोकता है या अभी? सागर नहीं, तो आ मैं गया तो है। आ गया हूँ, मैं पीछे से कहाँ ठोक रहा हूँ? एल्स्टन था मेरे ख्याल से, कौन नहीं सा नहीं पता नहीं। नहीं नहीं, मैं पे पीछे था। मैं तो यहाँ उस बंदे को यहाँ पे देखने गया था। यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे मैं ठुका, देखा वो रहा मैं यहाँ पे हाँ सागर। ये जीएस ने मेरे को नहीं ठीक ये है। देखना, मैं आगे गया सागर तुझसे। हाँ वो देखो, वो ऐसे ठोकर हुई और तू रुक गया पीछे, वो देख। भाई तू पता मेरी स्क्रीन में कितना आगे था? पता नहीं क्या गेम वही तो अभी जेडी और मेरी टक्कर हुई ना, वो भी वैसे था ठीक है, अपना लिखा हुआ ये था। उसके बाद ये था। हाँ, ये उड़ाया था तभी। इसमें तो मैं एल्स्टन को जीएस को बोल रहा था मेरे को ठोक दे, ठीक है, मैं आ रहा था फुल स्पीड में। हाँ देख यहाँ पे मेरे को जीएस दिख नहीं रहा, वो पेड़ के पीछे है, वो दिख नहीं रहा का है। हाँ ये रहा, मैं जब तक मोड़ने आया मुड़ी नहीं गाड़ी। एल्स्टन मिल गया ओ एल्सन वो एल्सन उठ गया भाई, एल्सन गलत उठ गया। अनलॉक ब्रो, अचीवमेंट अनलॉक। क्या अचीवमेंट थी तेरी वो? अच्छा अचीवमेंट। थोड़ा पीछे कर, अचीवमेंट अनलॉक क्या थी वो? नहीं, टेकिंग द सीनरिक राउट। टेकिंग द सीनिक राउट। हाँ उसके बाद यहाँ पे जीएस को ठोका था। मैं 1 मिनट में आया। हाँ देख जेडी और मिरर कितने घटिया लगते हैं, पता है क्या? गाड़ी चलाते हो तो और भी घटिया लगते हैं साला। जीएस सीधा हो गया, एल्स्टन रह गया। ये है फिर यहाँ पे तो ये आते तो वो हुए ग्लिच हो गया था तेरा। इधर तेरा मेरा वाला सीन होएगा तो रोड। हाँ ये देख रहा, हाँ इधर इधर देख ये तू देखा अभी? तू आगे है ना, मैं तुझसे ओवरटेक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तू मेरे राइट में शीशे में आया, वो पटाक हो गया। अरे मेरे स्क्रीन में पता है कि तू था ही नहीं। रुक रुक, मैंने भी रिकॉर्ड करा है वो वाला पार्ट, तो देखता हूँ। मेरे स्क्रीन में मैंने देखा तू ओवरटेक कर रहा है, इसलिए मैं गाड़ी ना
मैं राइट में ले रहा था सॉरी। दोनों दोनों गोल घूम गए। दिखा तू कर। अपना शैडो प्लेस सही करो। माइक सेटिंग, वेब कैमरा ले रखा है साले ने। ये देख जेडी। शेयर तो कर स्क्रीन। हाँ कर दो कर। दिख रहा है क्या? एक बार रुक। कोलैप्स म्यूट। ठीक है। काया जीएस। चालू कर। चलेगा इधर से। वो फुल स्क्रीन करियो। हाँ साइड मिरर देगा मेरा लेफ्ट हाँ वाला। देख रहा हूँ। ये हाँ देख। उसमें लेकिन देखना मैं मेरी हाँ स्क्रीन में वही मैं तो। तुझसे आगे था। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। और सागर का भी सीन था ना, वो भी सेम था। पता है क्या, सागर के सीन में भी सेम ही हुआ रहेगा फिर, क्योंकि सागर बोल रहा था मैं सुन ना, वो वाला रिकॉर्ड होगा कि मैं ओवरटेक किया उसको। किस वो किसको बंदे को, overtake- अरे वो बंदे पट गए थे ना, वो ट्रक वाला। हाँ वो नहीं किया। सही है। चलो फिर भाई, गुड मिलते हैं नाइट। कल। गुड नाइट। ए एल्सन तेरा डाउनलोड हो गया क्या बैटलफील्ड? हाँ हाँ हो गया? हाँ, कल ही हुआ था 3:30 बजे को। तो भाई गुड नाइट, क्या बैटलफील्ड खेलते हो? अभी नहीं, ना अभी भाई कल। मेरे को अभी कल खाना कल खाना है, फिर मैं सोऊंगा मुझे से। कल भाई, कल 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 सुबह आ जा। कल सुबह? हम्म, कल सुबह मैं कितने बजे उठूंगा पता नहीं भाई। आजा आजा सुबह। देख कल सुबह खेलोगे तो बता दो, मैं जाग रहा हूँ मैं। सुबह मतलब 11:30 के 12 के आसपास। जागरा है हाँ मैं क्या होऊंगा, मैं 3-4 बजे तक जागूंगा आराम से शाम के। टाइम सो टेबल नहीं रहा तो अभी? टाइम टेबल सही कर रहा हूँ ना चलो मिलते कल। मैं। अगर खेलेगा जीएस तो कितनी देर बैठा है अभी? अभी कुछ खेलेगा तो मैं तो बैठा ही हूँ, मतलब ऐसे तो। नहीं मतलब मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ ना, फिर मैगी बनाने। हाँ हाँ तो आ जाएगा ना, तो मैगी बना कितने टाइम में आ जाएगा? आधा घंटा तो लगेगा ही एटलीस्ट। हाँ तो आ जा मैं तो हूँ मैं ठीक है। चलो मिलते बाद में जीएस। हाँ कल चल मिलते बाय बाय। हैं। बाय। फोन बस लेना ना। हाँ ले ले भाई, अरे भाई तो खेलने वाला रहेगा तो ले ले, ऐसे कोई ये नहीं है। मैंने तो खेलनी है मेरे को, इसलिए मैंने ले ली। अरे वो सेटिंग करके देना, बाद में खेलेगा मैं। कौन सी सेटिंग? कल कल 12:30 के बाद। ओके ओके। वो अरे वो ये इसका बटन कॉन्फ़िगर करना है। हेलो सागर भैया। चलो। अरे सागर छुट्टी है अभी, क्यों जा रहा है तू? प्लेन उठाएगा तू यार? मैं बोल रहा था अपन बाद में बैटलफील्ड खेले, तो कितने टाइम प्लेन उठाने वाला, कब जाने वाली ये बता। नहीं वही कितने घंटे उड़ा रहा है ये पूछ रहा हूँ। हम्म हम्म। Bye. बाय बाय। No, Pauline. For me, my textures are between 480p and 720p on Ultra. Yep, yeah, that's mine too. Yeah, you need buildings to look terrible. you need to get yourself GTX 980. It's the bee's knees. I have a 1660 Ti. That's overclocked. I see. It begins with a 1. It's not as good as one of those that begin with a 9. Yeah. That's why the i9s are better than the i1s. You see. Too much chocolate. I was really scared for a second there. You thought I was being serious with you. Yes. That, and at the exact same time, my content manager said I had to download something. I thought the game uninstalled itself. Lol.
I swear, I'm not even Awful, lying. he I said have lol. PTSD from that content manager. Throughout this entire event, we've maintained between 5 to 8 people ahead of the official fly-in. I'm sure they'll come back and argue that, oh, but on Twitch we had more people. I don't know. Has anybody checked out their Twitch? I'm assuming because it's official, they probably had like 1,000 people. But What's the in-game time right now Yeah, no. that you guys are When I maintaining? followed along with theirs, I've never joined in on the Discord ones because, well, when I did try once, it was just 1,000 kids screaming. They have 239, 240 live viewers. see, I think if we could fix this multiplayer leader selection thing, I think we could actually start pushing over 100. But people get so frustrated that they can't see where to go when you get above 50 people. It kind of acts as like an artificial cap. Well, we're quite good at creating there's a core of us who remain as a bunch. Well, What are your not me servers? obviously right now. But If you and- follow the bunch, you're always okay. I mean, I think that's a big deal. If you've got a nice tight bunch at the beginning, it's easy for people, I think. Are you Yeah. guys North EU? North Europe. We're not North EU. North USA. North Korea. East UA? North USA. We're North Soviet Union. Yeah, in Soviet North Russia. Pole. Alright, so Kept what wondering why I airport wasn't are you guys catching up. flying to? Or where are Mixture. you closest to? I'm sorry. We are in North Europe, yes. There's no EGT, is there? So you guys are over North Europe? So you want to be at a mixture of about 47% at the moment when you're at 10,000 feet. So just make sure you're leaning out your mixture. It'll give you extra power to climb. Yeah, they've only modelled a CHT, so you can't do it the proper way. But Can't tune it with a they've meter. modelled- But they have modelled mixture properly anyway, so generally just go about half over 3,000 seems to get the most power. Okay. Yeah, you weren't lying about your terrain looking really good. Pretty stunning. Yeah, mine is way less quality. Yeah, that's what happens with a GTX 980, man. I have a 1660. Yeah. I thought you were running dual 980s. Sounds like a I data thing. had to take one out because it couldn't handle the pop-out frames. I don't think a lot of games work with SLIs. That's actually right. I mean, it'd be cool if you did, because you just have 4 RTX 3090s. It'd be the most overkill thing ever. Yeah, but I already got a heater. That 747 is struggling in this thinner air to do these speeds. Yeah, I bet. Wait, So so am I. where are you guys closest to? North Korea. Wait. What airport should I depart from to get near you Our guys? nearest airport is Romeo Kilo 6 Delta. Yeah, but you could just spawn on one of us. You have to be a friend to do that. No. Okay. No. Do you? I think Well, you it's a do. 747 minimum amount down. to anyone. Is it VKSD? Romeo Kilo Juliet Uniform, that's the closest airport. Could go to 0 Juliet and wait. I cannot find RKJU. How about 0 Juliet? One thing I do need to do with the Twitch stream is figure out how to get game sound into it without getting Discord sound. Using OBS?
Ideally, yeah. Yeah, I think you should you can configure your input devices on OBS. Yeah, I probably need to create a virtual input device or something. Let's see if Sky's managing to stay with me. He is, even in this really odd configuration of descent I've got set up. Do you have a stereo mix recording device on your system? There is a stereo mix option somewhere. I've got 2 sound cards in here, so Yeah, just look at the record tab and see if you have a stereo mix. You can do a listen to playback through and separate audio that way. I can walk you through it later. Okay. I'm surprised the game doesn't give you the option of selecting audio devices. Like FSX and so on, you chose which speaker you used for communications and which you used for everything else. Yeah, it does. But you can't select a specific device, you have to just set your default. The communication, I think you select specific, and then the other one is default. I cannot find that airport. That's really weird. Romeo Kilo Zero Juliet What are the initials? RKZU? RK0J. Yeah, well, it's a pretty weird airport, I must say. What airplane? Bonanza. What's weird about the airport? Oh, Well, it's very small. Oh, भाई इसकी तो लाइटें भी होंगी. Tell them. I have the Bonanza installed. Which one should I use? Cessna 208 or Beechcraft or TBM? G36. It is a Beechcraft. You can have a look at the event text channel above this channel in Discord, and there's every information you need. You can download the Also, flight plan. you can download the flight plan. There's all airport codes and lifetime and everything else. If you download the flight plan and upload it, you can scroll ahead and you should see a big group of green planes flying. Oh, yeah. Assuming we're still on that line. Yeah, I see you guys. We're heading towards the airport. I'm heading back. Foot is not on the left line. We're not far off. Nicer mountains than we had earlier. What's your guys' cruise speed? Fast, slow, low, high. Yeah, variable. Very variable. Yeah, we don't really have a fixed cruise speed. Oh, okay. I think we've gone as low as 45 knots going over tops and hills. Yes. As high as 200 knots. Always speeding as hell. We are hand flying most of the time, so yeah. Well, I mean, the last 20 minutes we've been autopilot. Usually you just listen to Foot's engine RPM. It's not that bad, is it? Deploys flaps over a mountaintop. Sounded awesome, whatever plane that भाई was. acrobatic plane है. Just came past that. Yeah. Heard it too. Well, that was quite a rapid descent, wasn't it? No. Has anyone else had it? So when a plane flies through you, but it appears with just a pilot sat in your propeller. Yes. Sometimes well, a pair of legs go past my through my cockpit. what I notice is when we're flying in tight formation at the front, everything's fine. And all of a sudden, all I can see is Footy's pilot, nothing else. That's It's when an airliner has come up and wiped out the three of us in one go.
Spawn in clear sky and then change once you're in the game to live weather. Yeah, but it looks the same at the moment. Apart from the cold. Yeah. Maybe they've already implemented the wake turbulence without us knowing. That's why they disappeared. What? Because the airliners couldn't cope with our wake turbulence. Liking your dead end valleys today? Not. They're not dead ends, they're just climbs at the end, right? Yeah, well, it depends on whether you get over it or not. Oh, this was a gentle climb. Come on, this wasn't ridiculous. Yeah, this one was. I'm at 70% throttle, so I know it wasn't too bad. That's the first one I've done that wasn't a touch and go. Flaps. Brake left, brake right. Looks like another dam. Yeah. I assume it's just the default turboprop sounds we're getting, but it is nice when that one flies past it. Yeah. Almost forgot mixture again. Thank you. Yeah, I was a bit lean. Ooh, bridge! That bridge is over land, which means it's to go. Nice. There's a bit of water in the middle. I'm gonna That try would be it. quite some effort to hit that. Go on, Dostella. Yeah, it's good. It's good. No, no. Well done. Well, none of you fly through that span. Oh dear. I think the way you take us to a valley with its dead end and then apply the brakes. I didn't apply any brakes, not even flaps. Yeah. Yeah, well, luckily, actually, you didn't try and press that one. Yeah, so that was okay. This is an acrobatic plane and it cannot be driven like in stable flight for long periods of time. If it was that, fly with me. Beechcraft Bonanza. मैं इनकी तरह नहीं मुड़ सकता भाई से तेज एकदम ही मुड़ जाता है ये देख. That bridge is a bit low. उफ मैंने सोचा था हाफ टेक करेगा. Just a tad. Pulling some serious G's out here, I tell you. Should have taken the extra. The 339. Are there any Indian people in the channel? I learned recently that in, I think it's Hindi or Urdu, there's this thing they say, it'll be like, this is like Uncle G, let's say. And the G at the end means like extra, extra respect.
So I was just wondering, like, if they went home and was like, "Ah, Mum, I pulled 9 Gs today," how that kind of communicates. Wait. Like the Grand Canyon, but without such horrible graphics. I totally agree. कंटेंट है भाई ये मैं बोल रहा हूँ तेरे को I've flown down there a few times, even after the update, and I was just really disappointed about the graphics that they used in there. Yeah, that's the problem. Like, it's just one of the limits of mesh-based terrain that you can't do vertical walls or overhangs well. I feel like what they should do is they should stop making like so many people pay for all these landmarks. Like, it should look like that by default. I don't want to pay $25 for one city. I mean, it's a lot of detail. It's a micro pay game. Yeah, it's a lot of detail, and they put a lot of time and effort into it. But it's just, it's disappointing for me because I don't have that kind of money. Nobody does. But, I mean, like, I bought landmarks for London, for instance, because I live in London and I fly in London quite a bit. And that was a disappointment, though, wasn't it? That Orbix. Sorry? The Orbix landmark was a disappointment. It was a bit, but like, I'm going to invest a little bit on my local airport, my local city, or if I'm going to base myself out of somewhere. Let's say I was going to be the guy who flew out of Paris every day, then sure, I'd buy Paris. But you got to remember as well that it's not Microsoft who's building most of these additional content ads. This is other developers. This is companies trying to make money. Also, the more you put on that disk in that community folder, the slower the whole thing's going to go. Yeah. To be fair, I've only bought stuff from the official marketplace. So. Yeah, but if it's on your disk, it's not as quick as coming down the pipe. Huh? Well, if it gets it off the disk, rather than get it down a fast internet, then it's going to slow the whole thing down. But it can read quicker from your disk than from the internet. Yeah. Everything you download, it's got to store it temporarily. It's all the scenery around us. It's got to save it to your disk. I feel like what they should do is they should just make sure there's a... No, but the loading times take longer. It needn't put it on the disk, I'm assuming, because it's got to work with it fly in below RAM. the bridge. You cannot fly below the bridges. So if you've got loads of scenery and stuff, you can only fly below select bridges. if it's more detailed, then yeah, it's going to take longer, and potentially initial loading in at the sim, it's got to find all these things that you're not using that flight. Yeah. But if you're always flying in the same place, it's same as a rolling cache type situation. But do you think that's quicker than a fast internet? Well, yeah, because we're talking fractions of a millisecond to pull off an SSD as far as latency is concerned, whereas the internet, it's going to be at least 20-30 milliseconds round trip, and then you've got a stream of data. You've got a pipe that might, even if you've got a good 100 meg pipe, it's still 1/40th of the speed of your NVMe. So yeah. An SSD, yeah. What if it's a mechanical drive? Who uses mechanical drives? Well, some people that don't have any money have to. I'll pull out one of my old SSDs and send it to you. I'm a little offended by that. I used to have a mechanical drive. I haven't had. Me too a couple of years ago, but yeah. I haven't had a couple of spare hard drives in my Meanwhile, computer last maybe the weekend, mechanical and I drive took not them out facing last any night issue. because the noise annoyed me. I mean, how much are the SSDs nowadays? Oh, I got my 512 gigabytes for only $80. Yeah, I bought my first SSD 2 years ago. It's a fast SSD. It's a 1 terabyte second transfer rate. You can get a 1 terabyte drive now for about 80-90 quid. Yeah. That's close to $110. Oh, the M.2s are good, apparently, aren't they? Yeah, I got an M.2 1 terabyte. Paid about £90 for it.
The M.2 NVMEs are good. The M.2 SATAs are the same as a normal drive. Right, guys. I changed from a Samsung 870 to an 860. No, other way around. 860 SSD to an NVMe 870, and that was still a lot of improvement. Guys, I have to go in silent mode, so I will be flying with you, but you won't hear me anymore, so lucky you. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Yeah. I guess most people, whether you go NVMe or not, it is whether your motherboard has slots for it. So most modern ones do now. Yeah, I wish they make these a setting for the game where you can literally just download like the cities you want to, like just get like a 10 terabyte drive and download. It's the whole already world there. or part of it. It's already there in game. You can get So do you plug but your it doesn't discs work into the motherboard now, not into some kind of disk interface? I mean, So you just get a slot on the motherboard for them to go in. So my motherboard's got 2 slots. Oye, bye bye bro, koi desi lag raha hai. I understand what you're Nahi, nahi, saying, but that was, I mean, that's every my- sim, in contrary to a game, is normally built around a complete economy of third-party tools and third-party development. So yeah, you're normally developing the sim as a base game, and then there are a lot of companies who depends on getting their money. Yeah, and So you some of don't us- have to buy all the planes and all the scenery, and yeah. Some of it's linked. So Orbix, who did the London one, they've done a fair few number of the built-in ones for the sim. I think they're doing quite a few of the UK airports will be built by them. Yeah. Nice. They're all getting for free. I'm just flying upside down right now. Nice. I mean, we're getting constant updates and world updates, which is a free content for us. I think that's great, and that's a development I would like to see the next years. And I mean, they have said that they support this game for about 10 years, which no other game would ever give you without any DLC, which costs you as much as the game originally does. So I think it's fair. And if they keep updating and bringing in more content at this rate for the first 2 or 3 years of the game, I mean, it's essentially going to be like paying £50 for a base game and then £10 for each content pack every 3 months. What they have to help them this time is the in-game marketplace, because they'll be taking a cut of that. So they keep making a profit and therefore keep developing. Whereas FSX, they sold the game, then they made the acceleration extra pack, and then they basically stopped making money from people. It's only new purchases. Give them more. Yeah, that's fair. Fair comment. I don't know what's the percentage of fee they take from the developers to host their products on the marketplace. But What are the other two guys when you watching? think about it, that's the money they're getting each month for developing this sim, the base game further. So Almost 30%. एक तो मेरे ही आता है yeah. शायद की वजह से Yeah. दूसरा नहीं बाकी दो काम है But there's something very दिखा रहा है convenient मेरे को। about just going along and seeing if you've got any Twitch होता था, updates Twitch to your को पता चल aircraft जाता in था the कौन है, पता है। marketplace. It's quite slick. Yeah, sure. It is. It'd be nice if their process was a bit quicker. रोटी Yeah. का Been शायद a बड़े lot सारे of- लोग ने स्ट्रीम चालू करते हैं कुछ So काम से aircraft I म्यूट कर bought देते from हैं Sim Market और फिर अपना got काम updates a करते lot रहते हैं quicker ध्यान नहीं through देते there हैं than when they made it Probably the Benga in-game उनमें से एक marketplace. इंसान है Yeah. But that might be a teething problem, I guess. They've also talked about a community marketplace for freeware aircraft. So you can get in-game reviewed, theoretically safer than downloading random files from the internet. Oh, nice. And I mean, if you have a look at Flight Sim TO, there's a lot of free stuff. Yes. It's not that you have to pay for everything.
I mean, just the fly-by-wire mods, they're free. Yeah. CRJ, I mean, there's so much great free mods out there. No. Yeah, an awful lot of it's Google, isn't it? They ripped off the Google images and put them in the right format for here. Well, that's totally fine. Not quite sure how that's going to pan out. Flaps. How's it going, foot and mouth? What do you mean flaps? There's no flaps. Oh no. Yeah. Seem to slow though. I'm still doing 160 Sorry. knots. Look like flaps. Paranoid much? Yeah, paranoid. Totally paranoid. How's it going, footy? Not bad, yourself? Doing pretty well. How far into the event are you guys? Pretty, okay. 2/3. Okay. That means we're going to land in the dark. Oh, man. A little bit of night landing. Sorry? A little bit of night landing. Something like that. Totally fine with that. You're going to want to get to 0 Juliet while the sun is up because it's not really here. It's 2D graphics. I see some markings on the 2D graphics that make it look like it might be a runway. I assume it's where Control Freak is. Yeah. We're only a few miles out. Yeah, it's weird. I'm down at the what would be the 9 end, and the marking on the ground says 2-6. So I don't know what's going on here. R522. इतने अजीब से नाम कौन रखता है? I don't know how you managed to stop without those flaps going down. I'm just putting back on the throttle. What, reverse thrust again? No, like, you can watch my Twitch stream. I'm not doing anything funky. I believe him, but it's just the time it takes to respond. Yes. But by the time I notice. So what we need is brake lights. Nice idea. रेवी पेट्रोल का क्या रेट होगा? फॉरगॉट पेट्रोल भरवाना था. Yeah, we should do a क्या forum हुआ post था? about मतलब that. पेट्रोल बढ़ गया क्या? Now there's flaps. Just for the leader. In addition to always see the leader, give him brake lights. Brake lights. इसमें वो नहीं है, flaps नहीं है इसमें. Yes, but I don't know where. Me too. I'm so confused. What am I doing? I took off. There's meant to be a runway down here. I'm looking for Control Freak, but Yeah, when you see me, I'm on it. In the middle of the city. Yeah, I'm Okay. scooting down the other Coming in. end. So I we're mean, landing on the main street. Kind of. I'm right on the mark on the VFR map, so I just passed through the center of it, and now I'm going down the other end, which should be It's between the buildings. the 27 or the 26 end. We'll see What's what the it says. runway alignment? Looks like 26.8 or 27.9. I think I'm aiming at the runway, but there might just be a building. Yeah, I think it's a I building. do see it. Yeah, there's some markings to the right of what I think is the runway that look like a runway, but there's a building right in the middle of it. that's a road. The 747's going. And then Oh, there's no, a the road. markings. Let the 747 go first. That'll clear a runway. Please no. Nice. Touchdown. Anyway, good luck, everybody. Thank you. Yeah, someone counting on pulled it. Somebody nosed into the ground. 747 did it. Yeah, Very you found it, sharp, huh? Footy. I think There's so. got to be a runway. I've got cars overtaking me. If you look very carefully at the ground, you can actually see numbers printed in the ground. So this is one of the hidden runways. Where it is actually a tarmac runway, but the Sims missed it. So there's actually a way to report that. There's a special report thing for missing or unmarked runways. Hello, please. And go straight through to the CIA. Maybe then go check it out. Be right back.
Yeah, I think we take a break here for 4 minutes, so we'll take off at 21:57. मजाक हो रहा है यहाँ पे ये लैंड हो गया यहाँ पे. Sorry, local time 17:57. Well, just 57 minutes past. 4 minutes from now. We attempt to take off at that time. I'll be fine. Bonanza's a great room. भाई मैंने लैंडिंग बड़ी सही करी थी बट मैं भूल गया था 2-wheeled aircraft. When you take off, try and fly over the other end of this runway, and you'll look down and you'll see the, it'll be upside down, but it's 2.6. Seems like that should be down here. वो इतना wheel इतने सही है ना. Unless the runway is actually running from there in the opposite direction, you just got covered up by a town. Yeah, it may be that they just dropped a bunch of 3D architecture on top of it. What क्या मजाक कर रहे हैं लोग यहाँ पे अपने प्लेन उतारते हैं घरों के बीच में. If you look at the texture to the right of us, it looks like a field texture. But those long stripes could be the threshold of the runway. Yeah, that's what I was thinking, but then if that's the runway, there sure are a lot of cars on it. And down the other end, there's a big building right in the middle of it. Yeah. Looks to me like they didn't recognize this as an airport. I mean, they have the data because it's in the VFR map, but for the purposes of rendering it in the sim, not so much. I've found a few airports where they've got the code and theoretical runways, but it's been turned into a housing estate since. So going up the military life as well as in the sim. Going up in the drone camera looking down, I don't think those stripes are runway markings. I think where we landed on the dirt strip must be the only runway that's possible here. This is. Yeah, if you get to the other end of the runway with your drone, look down, you can actually see the numbers in the runway. Yeah, I saw those on. Let me open my app. They're 2D rendered. They're 2D like painted on the scenery. भाई ये लोग खा जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वालों को. Not as bad as that runway we landed at. हमें नहीं पता. मेहनत करो. As we are here. Town had such a big mountain in the middle of it. It acted like a catapult. We just like shot up into the air. G5 to airport. South of Korea, you know. इसमें पता है आप में ना कुछ इंग्लिश रखने का ऑप्शन होना चाहिए था. Because ये जो local language pick करता है ना, it's not usable. देख हर लोकेशन पे ना उसके हिसाब से लेता है. जैसे तक इंडिया में हम यूज़ करते हैं इंग्लिश इतनी ज़्यादा तो आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा. Almost at time. क्या रिस्पॉन्स देख रहा था इसका? Okay, we'll get on the runway, ready to go. Full on acrobatic plane है. This is for Indian. We will be going in 5. Oh, sorry. Throttles up. Oh, brakes on. We'll be going in 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go. I'd love to stay facing backwards, but I think I'm going to have to face forwards for this one. Rotates.
Positive rate, missed building, gear up. Stay low into the right hand side of this mountain here and follow it round to the left. And just before you go past the low bit, we're going to bank hard right. ये हरकत करेगा. Anyone else feel a bit suspicious? Banking. Yeah. Oh, it's beautiful. Oh, that sunset's nice. You Yeah, thought the it was a reflection in the trap. cockpit are just ठीक है भाई, stunning. view तो sexy है. Let's go. View is appreciated. I was trying to set you up for something nice, and you all thought I was going to screw you over. You was appreciable. Okay. ठीक है भाई, ये देख लो, ये भैया यहाँ पे वेक टर्बुलेंस से मारने आ जाएंगे हमारे को. हेली सिमुलेटर भी होना चाहिए अब तो. Is he flying with his air brakes or that's just flaps? That's just flaps. और उड़ेगा भी कैसे बेचारा इतनी धीरे है. Hello वीर भाई. कैसे वीरो? ये लोग कहाँ भाग गए मेरी स्क्रीन से? अब ज़्यादा दूर के नाम नहीं दिख. खाली एडम का नाम सबका नाम कवर कर रहा है. बेचारा 747 मजाक कर रहा है. इधर था रे. अरे मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं अभी भी. मेरे एग्जाम्स ही हैं. बस ये है कि इस वाले एग्जाम के बीच में 4 दिन का डिफरेंस था. मैच खेलने बैठा थोड़ा. मैं तो डिव्स को भी फ़ोन किया था कि रॉकेट लीग खेलेगा तो था नहीं साले ने. मतलब उठा के कुत्ते ने बात नहीं करी. No, it's got 4 engines. 787, 72. Oh yeah, I see the 4 engines now. It's a 747. Yeah, it's a 747 because of the bulge on the front. But it could have also been an A380 because of 4 engines. It's not because it's got a bulge. Oh yeah, they do have the A380, don't they? Mm-hmm. Yeah, I don't want to download it though because it's too expensive for me. Could be a A340, AN124 or multiple other planes as well. स्टैंडर्ड में है. स्टैंडर्ड में है. मैं है कॉलेज स्टैंडर्ड में. ब्रो मेरे को पता है मैं हरकतें ऐसे कर रहे हैं भाई. सेंटर पे जाना पड़ रहा है भाई. और सेंटर पता है शायद वहाँ पड़ा है. क्या कहते हैं नॉर्थ दिल्ली पड़ा है. नॉर्थ दिल्ली आता है पता नहीं क्या. तिमारपुर पड़ा है भाई. यहाँ पे गवर्नमेंट पूरा वो है ना DVU. हाँ नॉर्थ कैंपस ही पे है वो. How is the 747 not stalling out or sinking? Flaps and flaps. Flaps and spoilers. What are his flaps at? Probably full. 90 degrees. Wait, so you put your flaps like down to get lift? Yeah, but it also increases drag massively, so it slows you down. Oh, I thought you like when you're taking off, you have your flaps at 0, or do you?
Depends on the plane. Usually you put your flaps hours 0 or 5 or 10 degrees. If you've got a very short runway, you may need to put more flaps on. Yeah, flaps add lift and drag. So if landing you want a ton of lift and a ton of drag, take off you want a bit more lift, but without the extra drag, you don't go full. There's also the issue that if you take off with flaps and you're struggling to climb or to get the speed that you need, and you take off the flaps, you lose the lift and you can just fall into the ground. Me is going either via not really recoverable in some planes. And then the other trick is if you start rolling down the runway with no flaps, and then halfway down the runway, add a notch of flaps, and then you get your speed and your lift. Yeah, for planes like the X-Cub, you can basically pump the flaps. So you just give a quick pump of it to get you in the air, and then as soon as you're airborne, you let go. Yeah. Well, that means you don't have to go through the dangerous rotate. This area would look really good with the terrain vector data being constantly updated. This is probably our last chance to fly by hand. Is everybody up for it? Yep, I'm already flying by hand. My feet are tired. I use an Xbox controller. Because of a rudder. Maybe assign your rudder to a dial or a thumbstick and save your feet. I was just wondering why my plane was trying to turn left, and turns out that tank is almost empty. Oh, damn. That'll do it. Right, Footy, do not turn. Turning. I could have predicted that. Yeah. Thank you. Yeah, I like the TBM. Switches tanks for me. That's why I like the menu at the top. Oof. Please fall back. Hey, I was looking at my fuel, Footy. Don't do that. भाई इसने थ्रॉटल किल कर दिया ठीक है भाई This next runway looks like the opposite of where we just were. It's 36 left and right, and paved and marked and everything. Big airport. Nice. Straight in, if you're on the route. Is this Romeo Kilo Tango Echo? Tango India. ये देख हरकत ही नीचे जा रहा है Which one is it? कैसे तेरे को लग रहा है कि तू निपट जाएगा You want the airport letters? तो जी फोर्सेस बढ़ती हैं तब आती है वो साउंड Romeo Kilo Tango India. Oh, it's pretty dark down here. My God. Yeah, it's getting hard to see where the valley walls are. Yeah. इनका टाइम आ गया है का टाइम क्या Time check. Local 1808. Local 18. Oh, that was smart skydive. Yeah.
You want to do anything at Tango India footy, or are we gonna try and get to? Well, like a loop the loop. Just a reform, and then we'll head out. Do the last leg. Just Yeah, doing the valleys at the moment before it gets too dark. I'm surprised you're that low. You and me both. I'm not coming down now. I've fallen for that before. मेरे पास acrobatic plane है. If we Vertical play climb those हो here, जाएगा चाहिए you can तो. trust me. He has got a CJ4, you know. I come up as a CJ4 for you? Yeah. Oh, I'm in the King Air. Oh. I'm in a TBM. I got a Forest Patrol livery though. Yeah, it's a livery mismatch. But yes, I can always trust footy. Things you didn't expect to hear tonight. भाई इसने इतना scam किया ना लोगों के Funny, साथ. isn't it, how few people trust my flying, and yet how many people trust my computer advice? Maybe it's a track record thing. ठीक है चलो. क्या स्पीड देख तू मजाक की तरह बढ़ती है भाई. Oh, it's dark enough that there's lights following the road. भाई ये 200 नॉट पे नीचे ले जा रहे लोगों को भाई. हरकत ही भाई. Oh wow! I didn't expect to see that many people behind me. You thought you'd lost them all? I thought everyone had given up and gone their own way. So I know when I went really slow before I changed direction, like half a. Oh, you're going to have to narrow it down. Sorry? You're going to have to narrow it down. We've been doing that all night. No, I was flying perfectly level at the right altitude. I just went really slow. Yeah. And then skydive, I think, rammed his flaps down and tried to descend, and then it was like, wait, he's still up there. Individual timing thing. Yeah, it's getting quite complicated now because instead of just trying to follow you, we have to think, yeah, but if we follow you down that valley when there's a dead end at the end, Which way we'd be better off just going past. उससे पहले जबरदस्ती 980 लगा के बैठा था. मान नहीं रहा था कि वही हगा रहे थे. और 40 जीबी रैम करके बैठा था. 32 प्लस 4 प्लस 4 मतलब 16 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4. Yeah, it's not the landing, it's how deep below the, how many feet below the. रैम इसने अपने दिमाग से उसी How करी है. deep is your love? How deep? Oh, look at those. Has everybody got headlights coming towards them? There's a whole row of headlights. Looks a little bit like the Father Christmas Coca-Cola entourage. Days are come. Days are come. That reminds... no, it's too late. If I have a coke now, I'm not going to sleep. Bastard. ये हरकतें क्यों करता दिख रहा है मेरे को. पहले मैं थोड़ी सी हाइट बढ़ाऊं. Is he going to turn left or right? I'm following the road. Surely you figured that bit out. I'm back. Yeah. It's the only marker that I... Oh, I don't know how high I am. I got my Dr. Pepper. It's so misunderstood. It's not as good as Coca-Cola. भाई को I'm भाई more of a को Pepsi किसे guy स्पॉन्सर myself. करिए देगा कुछ टाइम में. You can leave right now. Oh. There's Unless you got Diet Coke. Unless you got Diet Coke, I'll opt for that. Depends. There's a channel. There's a channel below this one, which is for people like you. They're flying A320s. We are sponsored by Coke Zero.
No, we're not. Our corporate sponsors are gonna be pissed. Next thing you know, you guys are gonna be sponsored by LaCroix or Perrier. No, I couldn't survive. Nice idea. Explain the lack of straight lines. If we were sponsored by, like an Irish black beer, Blackwater brand, then we wouldn't be able to say it. Frothy Blackwater. Yeah, I'm drinking my yellow water with John. I'm pretty sure you meant to stay away from yellow snow and yellow water, is what I was taught when I was a kid. Yeah. It's okay as long as drop down. He sort of glitched then for me, like he just suddenly dropped 20 meters and then dived down. Yes. I can't speak on behalf of the game. That's not what I saw on my screen. And now 760 Twitch viewers also agree with me. Is there one? I have no idea. I'm not even looking. I've said, people may not believe me, but Twitch is just an addition to this stream to make to this event to make it easier for you to see what the heck I'm doing. Ironically, it might be more interesting than most of the ones I've seen. Even with no sound. Yeah, especially without sound. That could be the secret. I do want to get game sound on there. I think that would make it easier to watch. Are you using OBS? Yeah. Oh, that's why you probably don't have the right audio device. Because I use RTL for mine, or Realtek. Does that cost? What? Does RTL cost? No, Realtek is an audio driver, IPCS. So how is that relevant in terms of OBS? I'm telling you, like, what audio driver, that's an example, like, if your game sound operates on, because for me, I have a Razer Kraken, so my sound outputs through Razer Kraken driver, which is a sound driver. I guess I can use those with my headsets. Generally, I do want to isolate the game your sound. I car don't want to have will Windows sound in my default device. cost more to service if you have a diesel car. Okay? I just haven't looked at it. I'm sure there's a way to do it. In the long term, what I figured out, except I'm fairly sound not savvy. for my dad, but just maybe not so pretty much on soon the PC I might be sounds buying a car. side of things. Google would know. I'm more a sort of high fidelity saved up money. audio sort But of वो person. probably dad चलाएंगे तो शायद diesel ही लें. But if personal, I would only get a Someone who's fallen for the scam. CNG slash. What, मतलब hi-fi? CNG की ना बहुत ज़्यादा line होने लग गई है. Yeah. That is the only Yes. reason I I do was not thinking like the same. CNG as of now. But I would get a petrol car rather than a diesel car. Gold-plated mains plugs. Do you remember those? To improve Yes. the noise ratio. And please It will put the cost about magnets around your 7k power for cords. petrol and about Yeah. 12 to That 14k for actually diesel. works. I have a bunch of But all the मतलब holy from proper stones service you're center, laying ठीक है? on your जो normal woofers or something अगर like आप that. अंधी That's अमीर गाड़ी खरीद रहे हो तो BMW की तो I 40,000 की I सर्विस worked होती है in a फिर hi-fi करा shop लेना. for a few years when I was younger. And I yeah, get like I worked in dad की कार है, उसमें supplier तो for literally I recording get the best studios, stuff. and we were always Dad की कार laughing gets total का racing engine because oil I mean a good set of तमीज़ से तो चलाते ही नहीं हम high-end लोग. monitor speakers, which you use for monitoring while you're mixing, is around €3,000 for a piece, so 6,000 for a pair.
And when you have a look at the hi-fi enthusiasts, that's the price normally you pay for, yeah, one. Well, one the speaker. The first time I went into a studio to get recorded, I was thinking, oh, this stuff's going to be amazing. And it was explained to me that the speakers they used to make all the editing decisions and mixing decisions were deliberately rubbish because middle of the road, yeah. The music has to sound fantastic in the worst to speakers. Everybody. Yeah, I was quite disappointed. Well, that's Yeah, that's how they've mastered stuff since like when the 90s digital era kicked off. Because when music became portable and people were listening through earphones, भाई फोर्ड तो 1200 रुपए लेता है व्हील अलाइनमेंट की तो सब छोड़े. iPods and whatnot. It all became about cranking up, forgetting the sort of the full harmonic range. It was just cranking up the volumes, making stuff louder, making it hit radio, so it popped out louder, like what they do with adverts. But they didn't care if the bass was fuzzy and distorted. It was just and you can sometimes get a track which was originally done in maybe the 70s or 80s, and then was redone in like the 90s or 2000s, and it's just garbage now. Yeah, that was called the Loudness Wars, which are actually over, thankfully over, because of, and that's very strange, because of Spotify. Oh. Yeah, Spotify requested that there is actually a dynamic range in music. Else they would self-compress or decompress the sounds, the music, and that changed a lot of the mastering in the last 10 years. No, not the last 10 years, but the last 5 years. Before that, there was such a loudness war, reducing dynamics, and just get the loudest music out there. That was really bad. And it just became relentless, didn't it? It was hypnotic. It was horrible. Yes. Whenever trying to speak, Dustels, your mic sounds absolutely terrible. You can't hear anything you're saying, and it's quite nasty on our ears. That's code for fix your mic. Latest loudness, it's quite good. So in the UK, I think quite a lot of countries now, they made a rule about the advert volume. Oh, that got stupid. Particularly in America, it's when I've been there, adverts can be so much louder than the actual program you're watching. Yeah. We used to, just as the adverts were popping up, you'd get there really quick and hit the mute button or turn the volume down. So I understand. There is a way of, in this country, making it sound as if it's louder, because the measure is just some kind of, I don't know, RMS or something. But you can do things to make it sound a lot more prominent than it should do, and still meet the measurement. You can compress it. I don't know. It's obviously, if it's RMS, then some kind of averaging of the peaks and the troughs. But I'm guessing what they do is they hollow out the middle of the spectrum and really hit the top and the bottom just to make it prominent, I guess. Quite the contrary. Oh, really? Yeah, because the peak RMS or RMS measurements are over the whole spectrum. So medium bass would over measure every other frequency, because that's so much power. So if you just drop the bass frequency and boost the mids, which are actually what is perceived loudness for speech or anything else. Right. What is that noise? Please stop that. If that noise happens if the noise happens again, stop, and then I'll go and get them banned. Yeah, they did it in, I think it was Terminal 4 yesterday. I was in it and people were trolling.
Yeah. भाई I अगर wasn't तू इसको there, ज़्यादा so- लो कर देगा ना What's throttle happening? speed वो My main जनरेट trick is करना just बंद to कर avoid देता है TV इलेक्ट्रिसिटी adds in now. ये क्या स्कैम है ये क्या No, स्कैम है Yeah, I don't watch TVs like 10, for the last 10 years, I think. I stopped watching TV when I worked for the BBC. Really? Yeah. That's ironic. Last time I ever paid for a TV license as well. Is that a little bit like seeing the food being cooked, all of a sudden you don't want it anymore? No, when you start there and you see, when you start there and on your very first day, Stephen throwing away £3 million worth of IT equipment which has never been used. No. Yeah, you start to question. Rudders turning left. You need to turn on the assist auto rudder on takeoff. Oh, okay. I'll do that. भाई इसमें एक ही लाइट है खाली रनवे लाइट Unless you've got rudder pedals, in क्या which मजाक case you उड़ा can रहा था control it मैं manually. Where are you going first? Go back to the start of the runway. I might grab some fuel first. will electricity come back I got 28%. I'm good. not ठीक है भाई ये कर लेते हैं ना ये कर लेते हैं It's been squashed by a 747. अगर ज़्यादा धीरे चलाऊंगा तो उसके साले इंजन Did anybody like the runway transition I did on final? ओह देख Yeah, that was amazing. Yeah, I read about मैंने listened to लो stuff on करा बट YouTube, लाइट ऑन नहीं है and तो they चालू were रहेगा saying that सब sometimes when you're approaching ठीक है a runway लाइट agency ऑन will करूंगा offer बंद हो you जाएगा a different runway because it will make it easier for them or whatever, and you as a देखो pilot क्या can make the decision whether to transition बैटरी or रेड not. कर And I thought, देता well, है ये I've always lined up on a runway and landed, so I wanted to try a transition. Another similar situation you can get in real life is you could do an ILS for one runway and then circle to do a landing on the opposite direction runway. So for example, if one doesn't have an ILS, you can use the ILS to get away the clouds and then transition to any other runway. Ah. Well, that's neat. Okay, let's get back on the runway. Guys, I'm going to call it a night. That was great fun. Thank you very much. And your next one is Sunday, right? Sunday, yes, yeah. World Tour on Sunday. Fantastic. Have a good evening, guys. See ya. Good night. Bye bye. Good night. Great. Good night. Bye bye. Right, final leg. It'll be a little bit dark. We'll be flying over Seoul on the way in, the capital of South Korea. And we'll be landing on the far side near the coast. I'm going to divert slightly off the nav line. We're going to be following the river round, which is slightly longer. But I think it'll be a nicer flight. I'm going to do this initially at highish altitude, and then I'll descend. Significantly lower as we get towards Seoul. There's meant to be some pretty great buildings there as well. So I did mention earlier they're like the digital capital of the world. So yeah, they are more tech than Japan these days. Check what my tanks are doing. I did feel like I was pulling to the side. Right, main. 3% का पावर नहीं क्रिएट कर पाता 5% का कर लेता है ठीक है भाई Oh, sugar. I forgot to close my cowl flaps earlier. I've been flying with my cowl flaps down. It's like flying with your zipper done. There's a pair of floodlights on the ceiling for anybody who wants to light the cockpit up a little. I turned mine off. It's getting too bright inside, so you can see outside.
I wish I could turn those damn panels down. Another reason why I like the Mooney. If you have the working title mod, you can turn them down. Like pressing the menu button, I don't think you can on the default. No, you can't on the default. Does it have reverse thrust? Alright guys, when are we taking off? Momentarily. I'm just appreciating that they've actually modelled the cable connecting to the yoke. Almost every aircraft I've flown in any sim hasn't. Like, 4% पे no power, 5% पे power. ठीक है भाई, क्या ही बोलूं? Interesting. Cool. Well, here we go. Spooling up. Jets and airliners, go please. एक शासन सबको आगे आने दे. मैं बस. Here we are, final leg, leaving Romeo Kilo Tango India, heading to Romeo Kilo Sierra India. We will be climbing to some altitude at some rate, and we're going to be going in 3, 2, 1, go, go, go. Me now, tell me now, removing handbrake. Me will apply now throttle in 3, 2, 1. I just found the dials for controlling the brightness of the displays. It's underneath the right-hand yoke. And rotate. Gear up. Let's go. Engaging autopilot. Whee. Heading. What heading am I going to take? Ooh. Oh, well, I'm planning on going that way. Okay, let's see if I can correct this. Oh, my plane seems to be wobbling left and right. There we go, it's stabilizing now. Then you have a stunt plane. Casually pulls off stunt. Gonna want to climb smartly if you're sticking to the route. No, we're following the river. Copy. But we're already at over 3,000 feet. We're climbing pretty sharp. I'm going to throttle back to 95% to make it easier for people who are a little bit behind me. Wow, somebody went past like I was standing still. Yeah, that was me. I need to control my throttle. Hello, let's go. Full power. Hold on, were you the Pepsi guy? Yes, I am the Pepsi guy. Jeez, man. People say I have too much Coke. You're literally buzzing. Yeah, man, I was trying to convince my mom to get me a mini fridge. You don't want to go down that route. He has a mini fridge from the 70s I really want. Before we find he earned it. भाई शाज के सेक्सीज का ये दिखा रखा है यार इस गेम में यार. देखियो क्या क्लाइम मारे इन लोगों ने. Hey Skydive, thanks for finding that panel brightness. I never knew it was there in this plane. Neither did I. Oh, where is it? So underneath the right-hand yoke, there's a few little knobs that control the brightness of your displays. No.
Very fancy. Vertical climb 1000. So what do they call the haze of sun on the horizon? देख रहा है शायद vertical climb कर लिया bro मैंने पकड़ के इनको. I don't know. You know how the darkness when it comes is the Terminator? I was wondering if the sun had a name. Red sky at night. Positive climb rate है. Captain's delight. No, you got it all wrong. Red sky at night, Turkish delight. भाई ये ऐसे altitude पे ले जा रहे हैं plane freeze हो जाएगा. And then was it purple sky at night? And then what? Purple sky at night, you've been going to the wrong party. भाई कहाँ है? कहाँ है? Warning solar flying from rear seat only. Ooh. So our ground speed is increasing slowly. I'm not sure if that's just because the rate of ascent is decreasing. हमारा वो मतलब मैं बचेगा. If our airspeed remains constant, it should be going up, assuming wind's not. Airspeed is remaining constant, but if we're climbing less sharply because the air's thinner, surely we have to be going more across the ground. Even in the last 6,000 feet that we climbed, our ground speed's only gone up by 4 knots. कुत्ता बना दिया मैंने. भाई ये लोग कैसे क्लाइम कर गए इतना ज़्यादा. मेरे को ना मेंटेन करना था वो स्पीड में ज़्यादा रखनी थी भाई. It's very interesting. ये लोग तो 110 की स्पीड से क्लाइम कर. Me will intersect their path. वो देखो रिफ्लेक्शन आ रही थी ऊपर से इनके प्लेन के. यो आ गया मैं वो. टैंगर रेट ऑफ क्लाइम 900 फीट पर मिनट. That's incredibly close flying for being in the dark there, Skydive. Can you even see my plane? Yeah. I've got all the lights off in my cockpit, so it makes it easier. You can still see me. Can you not see me from the outside? I can, but I turned off all my lights. It's a joke. Yeah, I can still see the silhouette of your plane. Aww. There's not much moon, but with this much city and stuff around, it'll be visible. So many lights and. Oh, you're looking up so you can see me against like the haze, whereas you're kind of behind me. If you turned your lights off, you'd be almost black. We'll give it a shot. Shift L. When I turn my lights back on, though, it's invisible हो जाएगा. Do you just mean landing lights? Or whatever the external lights are.
There's some on your wings, some on your nose. ये पता Yes, I can. But is ये that a ऑटो पायलट reflection of वाला me? प्लेन चला रहा है ना तो Oh yeah, ये you're बड़ा completely मैजिक gone now. प्लेन कर रहा है Wow. You just see your name 110 moving. की स्पीड मेंटेन कर रहा है और क्लाइंब करा रहा है Interesting. It's nice how my light source models against your plane as well. Didn't actually turn my lights off, I just flew close enough that when Oh, you you do did the feel. kind of invisible thing, it turns the lights off. For some Ah. reason. Interesting. Guys, do I need a VNAV or anything like that on for autopilot altitude to work? No. What plane are you flying? I'm in the Beechcraft. I think it's the G36, same as you guys. Yeah, so you dial in the altitude you want, and then you dial in, you either choose vertical speed mode or flight level change, FLC. Vertical speed mode, you choose how many feet a minute you want to climb at or descend at, and it will maintain that. Flight level change, you tell it what speed you want to maintain, and if you apply more throttle than required to get to that speed, it converts that power into climb, basically. So yeah, so you dial in your altitude, hit maybe vertical speed, hit nose up a few times, and make sure the autopilot is on, and it will climb you up to your destination altitude at whatever rate you set, assuming the plane is powerful enough to handle it. Ah, lovely. Thank you very much. Yeah, it was flight level change I was confused with. Yeah. Yeah, set the speed, the plane will maintain that speed, and then you push the throttle in to whatever power level you want, and the excess speed will climb you. राज तूने वो देखा है Sweet, Netflix thank पे you very much. Snowpiercer करके एक शो है Randomly frozen in place. और Yeah, Brooklyn you Nine-Nine flew का backwards latest too season quickly. आया bro वो देखी Yeah. No, I you see all that. flew past me. I'm not moving for some reason. Maybe you accidentally hit the active pause. Hey guys, I think somehow. The active pause is the pause button above page up. What airport we going to? I didn't touch my keyboard or anything, but yeah, I seem to have gone into active pause. You can undo it on the top menu, the one all the way on the left. Yeah, that's what I did to get out of it. Right. I can't even see my keyboard with VR. After you land, maybe look at your controller settings and keyboard इस प्लेन mouse का आई थिंक settings हो गई ना and see if it's घंटा bound कुछ to नहीं कर something पाएगा that मैं you might hit accidentally. सीधे जमीन में I जाएगा suppose I ये didn't touch anything and it just happened. Well, Let's that's have a look, scary. see. तेरे को सच्ची बता रहा शायद अगर इसको कुछ हो गया ना Bonanza has actually तो ये सीधे implementation जमीन में of जा रहा है। Cortana. More than half of South Korea is cloaked in forest. अभी नहीं देख पाया and kind of Can't really awaiting get through. series It is the breakdancing capital of the world, put on the map by Gangnam Style. I was also It's avoiding famous for but I surgical was enhancement. creating something अब वो I'm गलत topic not पे जा रहा है gonna लौंडा read any surgical words to that. enhancement and all that What kind of surgical enhancement? देखा मेरे को पता ही था ये It has a होएगा growing international film industry, and I'm not going to read any of that either. And tension with the North is damaging its tourism. Well, there's nothing new about that. They've been at war for like 50 years. We should check in. What airport are we going to? We are heading to Romeo Kilo Sierra India. Romeo Kilo Sierra India कहाँ पे भाई Just about halfway there. Apparently, in South Korea, it is common to ask other people about their blood types. Why? oh ये रहा You never know when you might need some blood. It contributes to a person's personality and characteristics. Blood types can help you choose your spouse, since your partner's blood may not be a good match. ठीक है भाई Makes more sense than your star sign. South Koreans are 1 year old
South Koreans are 1 year old when born. You'll be very careful when asking how old people are. Especially when you're younger. Fan death is superstition. There's an urban legend that electric fans that are left on while you're sleeping in the room with a window and the doors closed can cause death. It can lower your body temperature, cause hypothermia, and kill you. They are the largest drinkers or alcohol consumers in Asia. Damn. Oh, I heard about that urban legend with the ventilators. That's actually really a problem because some people are dying because they're overheating. Oh, the irony. The North and South are still at war. The DMZ is great for wildlife. Oh my god, I need to move there. Valentine's Day is for guys, not for girls. Yep. It's held a month. Why do you need flowers? No, I want to be the recipient of gifts for once. Am I not allowed to be treated like something special? With flowers? Well, like You just have to come on here and organise flights. Mobile phones, graphics cards, all that stuff, right? No. Couples at Christmas, families at New Year. Interesting. That's like the Japanese tradition with KFC Christmas. Rusty, how high are we going here? I was just stretching the wings a bit, see if this plane was, functioning again. I haven't flown it in a while. Are you uncomfortable? The ceiling is 14,000. Titles over names. South Korea often gets confused when to use names or titles. Korean culture is very hierarchical, much of it based on age. Okay, it's just like Vietnam. So I can tell you, if you ever date a traditional Asian girl, right? They do have family hierarchies, and you got to respect the elders. When your girlfriend or wife's mother is yelling at your girlfriend or wife, don't step in the middle and yell back. Doesn't end well. Talking like hunger strikes, rearranging planes, sleeping on the floor, all this crazy stuff. Whose side were you on in this? Sorry? It sounds like you've got an example. I'm wondering whose side you're on. Wife or mother? I always stand by my wife. That's one thing she can always rely on. You attack my wife, you attack me. In South Korea, 4 is an unlucky number. So interestingly, when I was in Hong Kong, I was staying in an apartment complex that was like 15 stories tall, and it only had like 12 numbers on the elevator. I guess maybe it wasn't 50, maybe it was only like 11 stories tall. But anyway, so you'd have your normal numbers like 1, 2, 3, and then it would skip 4. It'd be like 1, 2, 3, 5, I don't know, 8, 9, 11, 14. There was like a bunch of numbers missing, and it's because they're unlucky. Or they had another elevator going to those. No. It was literally one elevator, and well, it was 2, but they all had the same numbers in. I think a lot of Western countries have that with 13, though. A lot of buildings that have number 13. Yeah, but they had a lot of missing numbers. That's the point I was making. What do they do with the empty spaces? Or like, do they make the ceiling full? A lot of times that's where they'll put like air conditioner and heating units and just maintenance stuff. I think sometimes they just rename the floor, so they don't have floor 4. They just go 1, 3, 5. That too. Or maybe duplex apartment.
Yeah, maybe. One of the interesting facts about South Korea is that spam is a common gift. Like tin spam is a common gift. It's real big and white. Toilet paper warms the house. If you're planning on having a housewarming party, after the move-in, don't buy any toilet paper or laundry detergent. You'll get it as gifts. They give other people toilet paper and detergent. Wow. That was not just a 2020 thing, was it? In Germany, it's actually bread and salt. When I moved in here, I did have 300 rolls of toilet roll. So 300? yeah. Well, I went onto this website. It was some like bulk discount site, and I ordered, and it was like ridiculous price. So I ordered 2 stacks of 96, and they both turned up, but the people who made this particular brand of toilet roll had changed, and the picture they used on their website was of the old style. So I bought it because it was the old style, and then when it arrived, it was the new style. So I complained and tried to send it back. So while I was doing that, I bought more toilet rolls from someone else, and they turned up, and that was like an extra 60 or something rolls. So I ended up having 192 rolls of this stuff that they ended up refunding me for, but refused to pick up. Oh sugar, I've got a term. And the 60 odd something rolls of the Australian brand Who Gives a Crap. No, I'm not dying plane, no. Yeah, I basically had like 260 odd rolls, plus we had some when we moved in from where we used to live. So, yeah, it was close to, it was high 200s, closer to 300 rolls, and it filled up a lot of space. It took us the best part of 18 months, 2 years to get through. Wow. भाई एडन क्या उड़ा रहा है? इसकी लाइट बड़ी सही लगती है. Could have made a fortune in Germany. Yeah, well, I think you know me well enough by now to know that I wouldn't go price gouging people. Oh geez, somebody just buzzed past me. I don't know if I can climb any higher. I'm almost stalling out at this. I've been flying real low and slow over the city, and it's stunning. We haven't got to the city yet. We're still quite a way behind you. Yeah, I'm not sure why that is. I'm going 125 at a near 50% throttle. Kind of waiting for you guys, but it doesn't seem to be working. My ground speed's 118. My headwind up there and going slow. Yeah, I was climbing at 110 knots. The ground's just shaking a little bit. I think you guys are going slow because you're up so high. Yeah, We're too I don't know if 90,000's good. वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा. Did see a weird effect. The moon was completely obscured by clouds. I could just see it kind of trying to peek through, but every now and then I'd catch a glimpse of it in the reflection of water below me, and it was completely formed and clear. Nice. I don't see any moon. Seems to be off to the left of the direction of the route. It's straight in front of us. I bet if you switch to clear skies, I'm sure it's right ahead of you. Fair enough. It's a very slim moon. Seoul, where we're entering, is a huge city. It's the largest city in South Korea. 25 million people living within the city limits. It's not just a large city, it's actually the 3rd largest city in the world. Although navigating a city as densely populated can be a little daunting, I haven't done it before. It's very big, very highly densely populated, lots of people live here. Food delivery is taken very seriously. If you're a fan of ordering your food delivered, you'll fall in love with the way South Korea handles food delivery. It's considered one of the best in the world.
Whether you're ordering from the barbecue restaurant or a fast food restaurant, you'll probably have your food delivered to you via an employee on a motorcycle. The best part of a motorcycle means that it can squeeze between cars and zigzag through traffic to get to you way more quickly. Heat rises through the floor. Underfloor heating. Sleep deprivation is a very common occurrence. While being sleep deprived is a reality across the world, part of South Korean culture, blah 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 blah. Samsung is everywhere. Men and women are obsessed with makeup. Okay, I wouldn't really survive out there, but you can drink anywhere, and we mean anywhere. Wow. You can't talk about that on this channel. Jaywalking is not a thing. Internet censorship exists, and not just in your place of employment. Plastic surgery is super normal. Do not put the toilet paper in the toilet? What? China's was the same when I was there. They had baskets for paper next to the toilets. Which Yeah, but gonna be stinky. Yes, it was. Yeah, I was in a hotel in Crete that did the same thing, and the maid came in every day to take away your bog roll that you'd used. So whoever said that before was right, that the way the moon looks in the sky changed to clear skies, and it is just a little sliver of the moon, but the reflection is full. Like full circle. That's right. I took a screenshot of it. I'll post it later. Most populated in city in Shanghai after Tokyo and Delhi. Oh. Raz bhai also spit in facts. यार मैं देख रहा था how to turn off engine. Oh, did we just kill it? It really is lovely from like 9,000 feet. All the rows of roads and stuff. Yeah. I love the mountains and the photogrammetry over here. It looks really nice. I love it. Yeah, no. Mountains just look black to me. Well, for me, the mountains are like, they have like a lot of detail, like closer to real life detail. See every curve and edge on the mountain. I'm assuming your local time is not 1856. No, it's around sunsets where the sky is very red. It looks very beautiful. Okay. It's such a massive, well, I assume it's more than one city. Like when you look to the south, it's just lights as far as you can see. No, it's third largest city in the world. 25 million people within the city limits. My favorite time in the game is 6:20 through 7:30. No, we're in 7:30 is for purple sky, 6:20 is for red. एक मेरे को फर्क भी नहीं. Are we close to the airport or are we around 2/3? Flying in the blind, technically. We're fairly close now. We're 30 miles out. Oh, nice. ये लोग खींचने लग versus. The city's definitely lighting up your plane. Yeah, it is. Like, you're so much more visible than when we're over the countryside. Wow. हाँ ये क्या भागता है भाई ये. This is looking really stunning. It is rather. Descending to 5,000 feet should still give us some perspective. Oh, there's the strip.
Actually, really nice lighted skyscrapers. Does he maybe mean in the country? That is possible. Is the airport right up ahead? Yeah, it's basically 30 miles ahead, 28 miles ahead of us. It's not the one you're seeing. Yeah, it's on the further out. coast. It's out. on the right. Oh, so it's not the white light? Nope. Don't fly into the white light. No, We could do a touch and go at that one. We could do, but to be fair, it's getting quite late, so I have a wife who's waiting for me upstairs. Oh. Oh yeah. All waxed and smooth. Legs. क्या बातें हो रही हैं? These things are safe for ये MSFS का Discord server, ठीक है भाई? Is that an island in the middle of the river or a boat? If you shut the propeller instantly at such speed, will it It's an break? island. Island, I think. You cannot shut the propeller at such speeds at all. You can like take away its fuel, but the only way it can shut off at such a altitude is if engine seizes. And even if engine seizes, What's the longest river in the world? If it's not in a climb, River Nile. or it's in a downpour or like downwind. Tabs go. Yeah, downwind. While going, while losing altitude, so it has like mass. It can probably break free. The propeller can probably break free. One of them. From the engine. Like not as in the whole propeller, but that thing can break free. What do you call it? So apparently, it's the Nile, Amazon, the Yangtze. From the flywheel and stuff, but not physically. In So America, when you go down, it's the Missouri, it will provide some followed by lift the Mississippi, because it followed by will the start Yukon, rotating again. Rio Grande, so on and so forth. Man, this is beautiful, this sea. Yeah, I love it. It's really good for you. Definitely is. Don't do much like, city at night, do we? Yeah, because for me it covers up all the blurry textures. इन लोगों को ऊपर से अच्छी लग रही है, नीचे से नहीं लगेगी. ये दिल्ली का दूसरा वो है. इधर को दिल्ली दिखाएगा ना, दिल्ली को बहुत सिमिलर दिखता है. We're in Alaska. What are you talking about? इतना सब कुछ है ना. दिल्ली मुंबई सब ऐसे दिखता है. Which runway are we going in? The one on the island. There's 6. What, on the island? And they all have ILS. Yes. Romeo Kilo Sierra India. I took the first one I got to, 33R. Yeah, there's no wind. Just pick one. अरे ये लोग आगे चले गए ना सारे. यहाँ कोई पीछे. ये वैसे अच्छा है लेफ्ट साइड में.
harder to see when you put your flaps down when it's this dark. I didn't put my flaps down. Like a bicycle chain. Like if you Exactly, break I it couldn't free of see. the spoke, it will. I just lifted off the throttle and then let the nose naturally dip. Yeah, we still got a little bit to go. Yeah, I'm just wanting to get a bit close to these buildings because they look so nice from high up. I just want to see what they're like down below. Yeah. The block of tower blocks we're turning towards, can they not afford their electricity bills? वो तो है ही है शायद ऐसे तो मतलब गेम की बात कर रहा हूँ मैं. Vertical textures, man. Vertical textures. जैसे देख यहाँ पे ना इन लोगों ने white light बहुत ज़्यादा use करी है. They don't actually put जो इन्होंने windows in the इंडिया tower का blocks सर्वे because किया they're था too ना उसमें expensive. इन्होंने white light use ही So नहीं करी what है, they like do is बहुत rare. they just have little vents क्योंकि for अपने the air यहाँ तो वही लगी हुई है ना बाहर and जो बड़ी a बड़ी Wi-Fi हरकतें हैं. connection, and that's all they need. हम भी नहीं ये देखते हैं. कौन सा फीड कोड आ रहे हैं लोग. That's okay for me. Who needs Windows when you've got Microsoft Flight Simulator? Exactly. Yes, I run Microsoft Flight Simulator as my operating system. I use it to control the autopilot on my car. Oh, I also use it as a download simulator. System stability simulator. I give it a couple of months till someone installs Windows on one of the PFDs in this plane. No, Linux. Linux. Yeah, Just because. I was thinking the iPad in the A320 fly-by-wire edition, since it has a web browser, you could technically go and play Flight Simulator 4. There's a web browser version of it. You could play FS4 in 2020, which would be hilarious. That would be awesome. पकड़ देख रहे हैं इनकी शायद. हाँ शायद मेरे घर के आसपास तो अभी भी बहुत ज़्यादा वो लगे हैं हैलोजेंस. एक्चुअली अच्छा वो डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे. हमने सब थक गए हैं इस एल्टीट्यूड पे चला चला के सब स्पीड बढ़ा रहे हैं. To increase the resistance on my throttle. It's getting a bit floppy. Happens to every man at a certain age. Your floppy throttle. Is that the floppy floppy? I see what you mean about the moon now. Yeah, it is a full circle on the water. Good, it's not just me. Either do you stay? I stay near Gajewar, near Akshardham. This flight had a bit of everything. We had all the excitement at the start, and then we had the autopilot at the end, night flying, day flying, sunsets. It's an official event, hands down. No, it's not. Official event. इनका ना कुछ हुआ है आज. Should have been more people here.
इनकी लड़ाई वड़ाई हुई है मेरे ख्याल से जो ऑफिशियल वो है ना साउथ कोरियन काउंटर पार्ट. I'm falling out the sky here. I'm kind of worried. I can't see what's going on. I need to throttle up a bit. It's a great big runway. Come in a little hot if you want. I was just coming in over water and I just kept on watching my vertical speed go like negative 400 and I was only at 600 feet. I'm like, this is not good. Turn on fuel approach. China circulating over the border again. Okay, I can see the runways. यही वाला है ना कि कोई और है पता चला स्कैम हो गया. I think ATC is listening to me anymore. I think I pissed them off too much. ATC has permanently suspended my services. Kind of overflew that. Oh. Okay, first stage. Coming in on, I don't know, left. Gear down, throttle up, second stage. Toga with flaps, toga with flaps. How we roll. Some sort of big square building on our left. Don't know if it's a terminal or like some sort of arena or something. ठीक है चलो बस ये हाइट मेंटेन करते हुए जा रहे हैं हम अंदर. ऐसे लैंड का parallel landing, let's go. Separation ना खो दे नहीं तो हो जाएगा count. If you lose separation. Yeah. 2 and 2. Here we go. Come on. Bring it home. Bring it home. Easy enough. This is not a stabilized approach. Shit, is my gear down? Stabilized. Mine is very stabilized. I can't see if my gear's down. My approach very stable. Changing to the attitude of the that we get nose up because we do not have nose. Okay. Your gear's down. Landing. That was a very fast stop. Jeez, I landed smooth and stopped like 100 feet down the runway. Hell. Land a space shuttle here. नीचे radar पीछे से आके लैंड हो गया. दोबारा से अब लाइट ऑन करोगे तो वो बंद हो जाएगा. ये सही चल रहा है भाई इनका. चाहिए तुम्हारे को throttle अगर तुम्हारे को there we go. I had a slight mechanical failure power sliding around the runways.
Come over towards these guys and park up. I can't see anything. You'd think they'd light taxiways. For a taxi. कोई एडन हरकतें करे जा रहा है. Oh, wow, that was a long flight. ये लोग तो सोच मेरे से पहले से Just barely caught up with you guys. I started out the whole route. What, about half an hour ago? No, about 10 minutes ago. Jeez. Oh, you're on slew mode or the race No, I'm flying my 152, my prototype. Oh. If that does 888 miles an hour, maybe you can go back through time. Is it the main runway? Or is it a taxiway? Well, I did start my game time at 0630 UTC, and it's still light out, so I guess I did go back in time? If this is a taxi. That was a nice one. It was a long one, wasn't it? I didn't think it was going to take that long, but I think I messed around a bit too much on the route, so... No. Made it fun. Yeah. Let's see if I can dial the time back just a little bit to get a little bit of light so I can actually see people here. Alright. There we go. Oh, that is beautiful. Dial the time back to 0923 UTC and look out to the south. I cannot scrape the ground with my wings. It's not. Right. Well, thank you very much for coming, everyone. That was a bit of an ad hoc event. And I know there was very little notice, so thank you for having so many familiar names here. Next event will be on Sunday, where we continue the World Tour. Events next week should be normal, which will be Monday, World Tour, Thursday, World Tour, Saturday, UK flight, and Sunday, World Tour. Because the patch should be happening, if it doesn't get changed again, on Tuesday, which means we can all download the update Tuesday evening or on Wednesday and be ready for the World Tour on Thursday. I may, depending on what my wife is doing, be available on Wednesday for a little bit of tootling around Wales or somewhere. But just kind of checking new stuff out, really, rather than actually doing a proper flight. But yeah, I'm not going to be hanging around after this flight because I need to go to make sure my wife is okay. So I wish you the best of luck with your flights this evening, and please, if you have any great photos, post them in the replyable forums. And see you Sunday. Thank you very much. Thanks, bud. Thank you for the good night. Cheers, bud. Bye-bye. Thank you. Good night. Good night, guys. Good night. See you next time. Me flying for fun, not taking up any hours. हाँ भाई, ये लोग बड़ा जाग रहे हैं. GS खेल रहा है. GS कौन बस खेल रहा है भाई. मेरे 800 बड़े नहीं होंगे. हाँ, यहाँ पे तो लोग सब साला पेड सामान ही डाल रहे हैं. लोग फ्री सामान डाल ही नहीं रहे अब. Like, where is free का सामान?
एयर इज फ्री की सीनरी, कुछ भी फ्री नहीं डाल रहे साले लोग, भला नहीं होगा किसी का। भाई इसकी तो जो मारी जा रही है ना आजकल, ये ब्रेडॉग 3D ने ना 737 बनाया है, जो इसने जिसमें से इसने आउटर शेल खरीद लिया किसी उससे, क्या कहते हैं, मतलब किसी प्रॉपर प्रोफेशनल आर्टिस्ट से, ठीक है। वो बंदा कह रहा है कि 250 पाउंड दो और मेरे से वो कर लो, ले लो, ठीक है। और ये बंदे ने तो एफ मारा है ना। 300. Retard. Retard. 30. 20. Retard. 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 Standard is 3 times, right? अरे तू सब छोड़ यार, मैंने गेम क्यों बंद कर दिया? मैंने वो डाला था, मैंने A321 का मॉड डाला है, वो ट्राई करना था। फक। Let me check something also. इसको 1-1.5 मिनट लगेगा स्टेबलाइज होने में। हो गया ब्रो। अच्छा एक बार चालू बंद करके चालू करो ना तो जल्दी से स्टेबलाइज हो जाता है ये। इंजन से पूछता है, मैं 1-2 गेम रॉकेट लीग खेल। even alive? Real. चलो मैन में गोइंग ना, तो देख के जाएंगे। 3, 2, 1। बताइए, I do not know much about 321. बताइए if something is wrong. Meanwhile, Steam trying to sell me FSX Steam add-ons. पूछा लोड कुत्ते जल्दी, टास्क तो है कि भाग गया फिर। Now my question is, has this guy made the 321 over the 320? Did I not unzip it?
ठीक है, नहीं है, चल बाय शाज। मैंने डाला तो आई एम नॉट श्योर हाउ इट वर्क्स। चलो boy, good night, thanks for bye Benza।